Hello everybody. Welcome back to our session on Python programming. What we saw yesterday was a basic introduction to concept of data types. And what we explored yesterday were the basic data types which Python provides us. Rather, we only understood what is a variable and how do you check for the type. Today, we actually plan to start with one of the very important function that we always need to use for accepting and displaying data. So once we have done with those functions, then I'll again come back to the data types because we haven't yet covered all the types. Yesterday we looked at some function. There was one function that we covered. That function was a function called as type. And we also saw another function called as ID. ID gave you so-called reference and type told you what is the data type of that value or the variable. So those two functions we had seen yesterday. So let's just have a quick recap about the function that we had seen before we proceed further. So the one function that we had seen, which is important and we always have to use it, was a function called as type. It tells you what is the type of the object. And that's the function called as type. Object type is accessed by built-in function. So you don't have to do anything. You can directly use the type. And we can use type function to know which class a variable or a value belongs to. I said type of 4 or type of x. X is a variable and 4 is a value. So I can still get the type of that value of the variable. The standard module types defines names for built-in standard. So there is an inbuilt module called as types that gives you the names of all the types. Don't worry about it right now. Worry only about type. And if I say type and the object, it will tell me what type it belongs to. It said yesterday class integer, class this, class that, it said. So that was about the function called as type. Any query regarding whatever we have discussed yesterday? Anybody has any questions? If anybody has any question, please ask before we go ahead. No. Sorry, come again. Sir. Rohit, I cannot hear you. Hello. Hello. Can others hear Rohit? Yes, sir. Yes, sir. So what is he saying? Hello. Yes, Rohit. Sir, I am saying that in Python, should we is there any need to define the data type like integer or string? Yesterday we saw that it automatically gets created. Variables are created in Python the moment you assign a value to the variable. You don't have to predefine the type. That is actually what dynamic typing was all about. We discussed that. Okay. Variable can have different types of value. Didn't we discuss that example? I could store Yes, sir. integer, a string. It's dynamically typed. So while C, C++ are strictly typed, Python is dynamically typed. So you don't have to specify, it automatically decides the type based on the nature of value that you have assigned to that variable. If you store an integer, the variable becomes of type integer. If you store a float, the variable becomes of type float. So you don't have to take any extra efforts to specify what is the type of the variable. Yes, sir. Okay, just to cross check or revise that. If you want me to take an example, we'll do that. Here we are. No, sir. No, sir. If I start with Python 3 once again. And if I say type of 5, it says in integer. I may take some variable, suppose age is equal to 56. So if I say type of 56, it says integer. If I say type of age, it says integer. But suppose I say age is equal to TWO. Okay. And now if I see the value of age is TWO. But if I now say type of age, sorry. Suppose if I say age is equal to TWO, and now if I say type of age, it says subtract string. But if I say age is equal to 2, and then if I say type of age, it says integer. So variable age, which was string type earlier, now it has become of type integer based on the value that we have assigned.
So nature of the Yes, sir. variable changes based on the type of value that you assign to that variable. So it is dynamically typed. Type keeps on changing based on what value did you assign to that particular variable. Is that okay? Yes, sir. Any other question, anybody? Turn on your cameras, please. Let me not ask you to do that every day. Piyusha, Pankaj, Kaustubh. Shweta. So the first function that you'll be exploring is a function called as print. Now, any language that you talk about, the most common operation that we perform is displaying some data and accepting some data. That's the most common operation that we perform. So today we'll explore the function called as print. But today when I write that particular code, I'm not going to write in the interactive shell. Rather, I'll use one more interface for writing the code. So what is the interface that I'm going to use today? I'm neither going to use any ID, neither I'm going to make use of the, let's use IDLE today. Yesterday we use command line interface, Python prompt. Let's use IDLE today. Every day. Sir, you are not Sir, I- audible. Sir, you are not Sir, you are- audible. Sir, you are not audible. Can you hear me now? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay. I do not know why, but the speaker is constantly changing. It's switching over the speakers. Can you hear me now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Every day we use different interface, and whatever commands that I show you, you can use in any interface. So that doesn't matter. I want you to have a comfort that wherever I write the command, it's the same command that I have to write. Doesn't matter where are we writing that command. Are we writing it on the Python prompt? Are we writing the interactive shell? Or are we writing in IDLE? Or are we writing in some notebook? That doesn't really matter. Command will still remain the same. So today we'll start with IDLE. So let's jump on to IDLE. So first what I'll do is I'll start off with IDLE. Here we go. So to start with IDLE, I'll type IDLE. I have more than one versions, 3.9 and 3.11. We decide to work on latest one. So I say 3.11 start. So I start with 3.11. Here it goes. It has started. So this is where I plan to write the commands. Is the font size okay, or shall I increase the font size? It is It's okay. It's okay, sir. Stable? Okay. So that is where we'll be writing all the commands. So this is ideally the interface where I plan to write the commands. But before we write the command, okay, let's try the commands like what we did right now. Suppose if I say age is equal to 56 and I print the age, it says 56. I say age is equal to TWO and I print the age, it prints TWO. I want to say type of age, it says it is string. It says it is string. If I had assigned age is equal to 56, and then if I say type of age, it would have said integer. So the way, and look, the best thing over here is it is giving you in colorful output. So you know what this pink color is a function name. This is the parameter. This is a string. So that just makes your code much more readable. So there are advantages of working in IDLE as well. So we saw some advantage of working in IDLE. It's a colorful interface that we have. Okay, but what is the command that we plan to explore today?
The command that we plan to explore today is a command that is print. As the name says, print, you must have already guessed it. It's meant for printing the result. So if I'm going to print something and that too onto the console, so in that case, I can make use of this particular command called as print. So let's use this print command to print something onto the screen, your console. The default console is your monitor. So you'll be having the output onto our monitor on the console and so on. Before that, let's go through the documentation of print. What does print say? What does it do? And then I'll quickly go ahead with a lot of examples that will give you enough idea as to how does print command works. So let me start off with the program. Just give me a second, the notes. Let me open up the notes. Just hold on. I'm just opening the right note to discuss. Let's see. So if you look at this particular function called as print, every function has some syntax. So there are some rules as to how to use that particular function. So let's look at the syntax. One is print without any parameters. So I'm not supplying any value here. Other is print where I can supply any number of parameters. There is no restrictions. So if this print, note करके रखिएगा, is a special function which takes in variable number of parameters. Like there are some function like factorial. It accepts only one parameter. That means the number whose factor is to be found. But print accepts any number of parameters. You can pass 3, you can pass 4, you can pass 5, you can pass 10, you can pass hundreds. So it takes in variable number of parameters. Variable, there is no restriction from 0 to n. So the first example is 0 parameters, and here there are n number of parameters that I have passed. Data values that we want to be printed. All arguments are optional. That means you may not pass any argument to this function. If no arguments are given, blank line is printed. I'm going to give a demonstration. The values to be printed one after another are separated with blank spaces. So there is a blank space and the values will get printed one after another. So let's look at this basic syntax in action. So what I'm going to do is we'll start with this ideally. I hope you can see this ideally, everybody. Okay. Yes, sir. So let's take some variable. I have a variable called as name in which I have stored somebody's name. So we have Viraj with us. Viraj with us. Watch it very carefully. Yeah. If I only say name, I got Viraj once again. But how has Viraj got printed in quotes? Can you see that? Although if I said double quotes over here, everything gets printed in single quotes. So I said, get me the value of this variable. Like here, we had said 2. So age, if I print, it printed 2. When age was having value 56. And if I had printed age, look at the first line, age is 56. If I printed age, it got printed as 56 as an answer. So when I have variable name as Viraj, it has got printed, but the name will come in quotes. So I wanted to print it without quotes. So I could just say print, and I can pass the variable name. When I pass the variable name, it's without quotes. So it's much unique way to print it. So here it was with quotes, here it is without quotes when I say print name.
But name is not the single variable. We also had a variable called as age. So I wanted to print both the values. Very much possible. So I say name, comma, age. Note, I have not left any space between both of them. I'm just saying name, comma, age. But when I print, it has added a space between them. It has added a space between them. That's the default behavior. So if I print any number of arguments, you will have one space between them. Let's do that. So we have name, age. These were two variables. Let's also print some value. So I say he's from Pune. Okay. His height is suppose 5.10 inch. Okay, 5 feet 10 inch. So that's his height. So there are four values I have passing right now. With prints Viraj, 56 is his age. Pune he comes from. And 5.10, yeah, 1 is its height. Oh, I wanted 10, but it has not taken 0. I'll show you how to do that. But it has printed 5.1. What is the value? So Viraj, 56, Sir. Pune, yes, please. Sir, we had taken the variable of name, we had Huh? taken the variable of age, Ah, so we haven't taken any variable named as Pune. So Huh? we had put them in double quotes, but we also haven't taken any variable of 510. So why didn't you put that in double quotes? No, these are two values. Pune is one value and 5.10 is another value. While Pune is a value of type string and string always appear in double quotes. While this is a floating point number that doesn't appear in quotes. If I put into quotes, then it also becomes of type string. But it's a number that I have. So if I want to consider as a string, then I will definitely put it into quotes. Like if I put this into quotes, the 5.0 will get printed as a string. A 5.10 as a string. But if I want to consider it as a number, so if I say 5.10 plus say 5, all in quotes, huh? So what happens? Let's see. I'm saying plus 5, huh? So it has printed as 5.105. About 5.10 plus 5 should become 10.1. Yeah, 10.10. That did not happen because it has taken this as string and it has just added two strings. Had I removed the quotes, then it will be considered as numbers and will end up adding those numbers. Suppose it's 5.12 and I say 5.12 plus 5, so it correctly prints as 10.12 and so on. Can you see that? Yes, sir. So if I take something in quotes, that becomes a string. But if I ignore quotes, then that becomes a value of some type. So here I could say 5.0 is what I have. So if I add 5.0, it says 10.12 and something. But 10, 5.12 plus 5, that becomes 10. So it is taking them as numeric value. So it depends upon what is the type of data. Here the type of data is string. Here the type of data is float. So we can just check what is the type of 5.10. If I say 5.1 card type kya hai, so it's of type float. So it's a float with precision, a number with a precision. Sir, Yes, please. sir, if you put 5.1 plus 0.9, will it come 5.10? 5.0 plus 5.1 plus 0.9. We wanted 5.10, plus no? 0.9. Now let's see this. So it has given the answer as 6. 0. Is correct, na? Yes, sir. There are some tricky things that happens with floats that I'll come to later. But luckily we got this answer as right. 5.1 plus 0.9, that's 6. Because 0.1 and 0.1 plus 0.9 will give 1. So 5 plus 1 is 6 kind of thing. So we got that right answer. So here whatever we have written, one more thing. Print without argument. Suppose if I only say print without any argument. Suppose if I only say print and I do not pass any argument. Look, it has left one blank line. Can you see over here? So print without argument leaves a blank line. And there is no magic over here. Why am I saying so? Let's understand the print function in detail. So if you go to print, the syntax is something like this. You can pass number of values. The separator by default is space. At the end by default is \n, that is new line. And the output that is sent is to sys.stdout, that's your monitor, and flush is false. So there is so much of things that are there. We don't really bother about it. Let me give you a quick glimpse into some things that you can understand right now. Prints the value to a stream or to sys.stdout. Sys, keep it aside, it's a module. stdout, it's standard output. Standard output is your standard output device defined by your environment, and that's the monitor. So output will go to the monitor. File. So if I'm saying file is equal to sys.out,
file object string defaults to the current sys.out. So sys.out is representing your monitor, so output is going to the monitor. Separator, between the two values, what separating character you would like to have, and once you finish printing, what would you like to do? By default, it is new line, and then flush forcefully clears the string. Now, while we do this, let me explain you what is the concept of a stream. Visualize stream as a channel of communication that connects your program with the output device or whichever device it is. So think it about like a pipe. So your program via some pipe, a stream through which the data can flow, is connected to some output device. By default, your output device is monitor. So this is your program, and there is one pipe that connects the output of your program to the monitor. So what is sent to that stream will end up in landing up to the monitor. But I can take this pipe, connect it to the printer. I can take this pipe and connect it to the hard disk. In that case, the data will go to the hard disk or to the printer, whichever device you are connected to. So visualize stream, visualizer. I'm not talking about technical thing. Visualize stream as a channel of communication that transfers the data from your program to the device to which it is connected. So it's like a pipe. It is connected to some device. By default, it is connected to monitor, so output is going to the monitor. But you could change the destination. You can say destination is not monitor, it is some hard disk. So you go into the hard disk in some file. You may say it's the printer, so it can go to the printer. That's your choice. So I'll quickly give you a demonstration about all these 4 options which are there. Flush we'll see in later. Have a look over here now, carefully. So we talked about value. We did not talk about separator. So let me give you a glimpse about separators. राहुल, आपके दोस्तों के जो नाम बताइए मुझे. Ankit. Ankit is one friend. Okay, then Shreyash. Shreyash is another. Then Omkar. Omkar. Then Prajwal. what? Prajwal. Prajwal. एक भी गर्ल नहीं आपकी फ्रेंड, क्या बात है यार. ऐसे ही कोई झूठ नाम बता दो. Rani is one friend. Okay, so these are his friends. But look at the way the names have got displayed. Ankit, Shreyash, Omkar, Prajwal, Rani. No, there is a space in between. Normally, when you print names, you separate them by using comma, isn't it? Rahul, comma डालते हैं ना अगर 4 नाम print करने तो. Yes, sir. So I want to give a separator. So what I could do, ये जो print है, here I could say comma sep is equal to, by default space है, इसलिए ऐसे आ रहा है. देखो मैंने स्पेस से हटा दिया तो एक कनेक्ट हो गया. तो मैंने कहा नहीं, एक स्पेस डालो, एक स्पेस ऐड कर लिया, आ गया दब में एक स्पेस. I say no, स्पेस नहीं चाहिए, कॉमा चाहिए. So I get rid of this and I put a comma. See how it has got printed. नहीं, कॉमा के बाद एक स्पेस चाहिए. Pay attention, कॉमा के बाद एक स्पेस चाहिए, तो ऐसे सेपरेटर कॉमा स्पेस. Isn't it good now? Yes or no? Yes. Okay. Now names have got printed. Ankit, comma, space, Shreyash, comma, space, Omkar, comma, space, Prajwal, comma, space, and Rani was the last one. But after the last one, the cursor has gone to the next line. The cursor is now onto the next line. So everything got printed, cursor has went to the next line. At the end, I want a full stop. After Rani, I would like to have full stop. That's all. So how do I do that? Watch it. I could say, comma, end is equal to, by default, it is new line. तो ये देखते हैं, ये आउटपुट तो लास्ट टाइम जैसे था, देखो यहाँ जो ऐसे था आउटपुट था वैसा आउटपुट आया. दैट्स द डिफॉल्ट बिहेवियर. एंड में स्लैश एन. आई से नो, एंड में स्लैश एन नहीं चाहिए, एंड में फुल स्टॉप चाहिए. वॉच इट नाउ. इफ आई पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड, कैन यू सी फुल स्टॉप एट द एंड? Yes or no? Yes. Okay. So we saw the behavior of separator. We saw the behavior of end. समझो, you wanted to have some other separator. That's your choice. तो अगर आपको चाहिए था दोनों के बीच में है ना एक एरो चाहिए, इसके बाद एक दूसरा फ्रेंड ऐसे. तो ये देखो, श्रेयस एरो, अंकित एरो, ओमकार एरो, प्रज्वल एरो, एंड में फुल स्टॉप. ओके, व्हाई एंड में फुल स्टॉप? बिकॉज़ यू सेड एंड में फुल स्टॉप चाहिए. So that's how you write the statement. So sep and end. Sep stands for the separating between multiple arguments. What is the separating character that I'd like to use? And end mein, after I have printed all the arguments, what I would like to do. So comma looks nice. So I just put a comma after that. Okay. So separator or end ho gaya. Now what remains is file and flush. Okay. So Sir, let me give it. Yes, please. Sir, if
instead of full stop, if I want to make it with a control character, can I Like- do it here? Like Like control M character, control, M control. control character, like control C or control M character. So what is the effect that you'd like to see on the screen with that character? What happens with the screen? On the So screen? basically, I want to create a data frame and want to end a line so that in the further script where I'm using it, it can detect that it is the end of file. Okay. तो end of line के लिए आपको new line नहीं चाहिए, correct? Slash n नहीं चाहिए. Right. हाँ, तो how do you type that control n character? So yeah, that's what I'm asking if we can do it, because in I think in shell it is some line ending with control characters. Correct. So different operating system will give you different opportunities. In Okay. Windows it is different and in Linux is different. If I create a file under Linux, your line will be terminated with CL and line feed LF. ये जो slash n है ना, वही Mhm. magical है. Now we are slightly diverting from the topic, but let me explain this because if you're working on multiple operating systems, you will need that. Normally in Windows, when I create a file, when I press enter to line terminate, correct? मैंने press enter press किया यानी line terminate होके आप next line पे चले जाओगे. Right. Okay, that is not the case actually. Let's cross check what you are guessing whether it is correct or not. Let me open up some file over here. Suppose I'm in Notepad++ and I open a file. Here I go. And I'm going to type some names. So I say first, second, third. So how did I go from first to second? कैसे गया मैं third से fourth? How am I going? क्या कर रहा हूँ मैं? So basically, there is a line ending. Line It is ending कैसे breaking कर the रहा हूँ मैं? क्या press कर रहा हूँ? line by Tab. clicking. So if Enter. you Enter press कर रहा हूँ. yes, Enter का character कौन सा होता है? Slash and new line. yes, but in Notepad++ there is something different. नहीं, it has nothing to do with Notepad++. तो जब हम लोग यहाँ कैरेक्टर कौन सा प्रेस करें? न्यू लाइन स्लैश एन. तो Yes. स्लैश एन है तो ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज एंड आई शो यू नोटपैड क्यों? आई कैन शो इट इन वर्डपैड आल्सो. आई कैन शो यू नोटपैड रेगुलर नोटपैड या नोटपैड प्लस. यू टेल मी एनी एडिटर. दैट एडिटर इज नॉट अ प्रॉब्लम. इशू इज विद द ऑपरेटिंग सिस्टम. So if I show you these characters, यहाँ दो characters आए. Can you see? Yes. So I'm just showing you invisible characters. तो आपके पास carriage return और line feed दो गए हैं. Means if I'm working under Windows, my new line character, listen, others who do not understand, just forget this topic. He's asking something that I thought, let me explain it so that it gets stuck. And then later I'll be coming back to the same concept when I discuss file handling with you all. But since he asked it, let me just touch upon, otherwise he will be troubled. तो सो नहीं पाएगा आपको. So when I press enter in Windows, your new line character slash n, that's enter. Slash n stands for new line in programming languages. That Yes. gets translated in two characters slash r slash n. तो CR जो देख रहे हैं आप वो carriage return है slash r. और Okay. LF देखा वो line feed है enter. Okay. Okay, दो characters आ गए. But यही काम अगर आप Linux में करोगे, then that new line remains as new line. It doesn't get converted to carriage. Carriage return remains as carriage return. Doesn't add that new line feed. LF यानी slash r add नहीं करेगा. Okay. So it depends upon which OS you are working. Okay. So actually, basically, I have encountered such problems. So I thought of asking this. Yeah, you can always ask. That's because at the end of the day, we are going to use this language to solve some problems, correct? So Right. we need to be very careful while we create those files, because probably your file is getting created automatically through the program. So if the file is getting created automatically through the program, you have to be extra watchful that such character translation do not happen. I pressed enter. So I wanted only one character's carriage return line feed to be entered available over there. But I Right. got two characters, correct? Mhm. So you have to take extra efforts to ensure that there are no such character translations that occur while you are creating those files through a program. Yes. Okay. So you have to be very careful. What happens is we type some ABCD in the file and we press enter. So we're expecting the file size to be A, B, C, D, 4 and enter is 5. And then when we say 6, then you keep on wondering where did I type the 6 character? When the Apache character type A, B, C, D and enter, I'm expecting size as 5 and we get size as 6 characters. So we should have an understanding as to which OS are we working on.
So keep in mind, just note करके रखिए everybody. In Windows, whenever I press enter, enter gets translated into two characters. Enter is represented by /n. Okay, new line. That's carry return. It gets translated two characters. Line feed, that's /n, and carry return, that is /r. तो आपने एक की प्रेस किया है और वहां दो कैरेक्टर्स आ गए हैं, दो अलग कैरेक्टर आए. That will not happen under Linux operating system. Linux says जो आप करोगे उतना ही होगा. No character translation will happen under Unix, Linux. कहीं कोई ट्रांस तो वहां इंटर मतलब लाइन फीड ही रहेगा, कैरी /r ऐड नहीं होगा Linux. So this becomes more important when we are doing some file processing. फिलहाल we are not doing some processing, so we should not be bothered much about these translations right now. जब हम लोग फाइल्स पढ़ेंगे ना, तो you have to be very careful about it. But note करके रखो. Nice that you reminded, asked about it. So there is something more that we understood. So can I do it through Python? Can I ensure only one character comes over there? We can very well do that. So that's वो print का काम नहीं है. There is other way to do it. Okay. Thank you. Okay. Anyone else has any other question? पंकज, पीयूषा, कैमरा क्यों ऑफ कर रहे हैं? संजय, शंतनु, श्वेता, ये क्या मुझे चेहरा दिखा के भाग जाना है क्या? कैमरा ऑफ तो मीटिंग में से बाहर. श्वेता, क्या इश्यू है? When you turn off a camera, it only raises suspicion कि आप है ना ध्यान नहीं दे रहे. Because I keep on switching from one face to another. So looking at you, I can understand whether you are paying attention या आप घूमने फिरने जा रहे. And I insist because I have seen students. एक स्टूडेंट तो इवनिंग वॉक के लिए जाता था. And then I realized यार ये बंदा हमेशा आंसर देते समय बाहर से नॉइस हो. मेरा कैमरा ऑन कर, I could see street lights. ऐसा थोड़ी ना पाइथन पढ़ाया जा सकता है. ये कोई गाना है क्या सुनने के लिए? वो इवनिंग वॉक के लिए जा रहे, गाना सुनते जा रहे. So that's not. You have to give dedicated space, time, सब कुछ फोकस चाहिए, तब जाके लैंग्वेज लर्निंग होगा. It's not like बैठे बैठे कुछ तो टाइम पास कर लिया. Okay, so don't ask me to turn on the camera every time. So these are nuances that normally the textbooks will not tell you about it. Okay, and that's the advantage of having a live session, because if you have some problems, if you face certain things, you can immediately ask the question and get it clarified. Okay. So we talked about two things. We talked about separators. We talked about end. So by default, separator is a space. By default, end is new line. But it also says file is equal to sys.stdout. So let us talk more about this. File is equal to stdout as well when we go ahead. So let's talk about this file is. Let's talk about file is equal to stdout. Now listen, one more point. The term file in programming languages represents devices. अब बोले क्या बात कर रहे सर? File is a file in which you write something. Obviously, yes. So monitor is also a file on which you write something. Okay. Hard disk is also a file on which you write something. Printer is also a file on which you print something. So output का destination जो है वो आपकी file हो सकता है. So it's a file. It's a device. So sys is a module that we have that has, मैंने कहा ना एक channel of communication है. Pipes on the stdout is like a pipe. तो उसके पास कई सारे pipes है. So let's explore what are the pipes that it already has. So what I have done is, I need not go to python.org every now and then. I believe, and I want you also to have the documentation already downloaded and kept on your in your system. That means we can have a quick access to the documentation. So let me close this. So I have my Python doc. I'll just click on Python doc. It will open in python.org. में आप जो देखते हैं वो है. So let me double click it once again. It starts. इसका फायदा क्या? इंटरनेट ऑफ रहेगा, then also I will have an access to it. I wonder why is it taking so long. Here it starts. And once it has started, I'll search for something called as sys. So when I cast sys module to search कीजिएगा. So let's see what does it tell us. Oh, it says there's a module called as sys. There are heading पढ़ लीजिए. Sys system specific parameters and functions. It says system specific parameters and function. So it's a module. It has number of things which are there. इसमें बहुत सारी चीजें हैं. हमें चाहिए stdout. तो मैं कहता हूँ stdout. So when I say stdout, it says okay, it's talking about sys.stdout display hook. Okay, और क्या है हमारे पास sys.stdout एक variables है. I'll say stdout में 21 times this stdout appears. So let's say और कहाँ आ रहा है stdout? Oh, here.
तो HTTP OUT नहीं है हमारे पास, HTTP IN भी है और HTTP ERR भी है. So there are three stream objects which are predefined. एक out है, एक IN है, एक ERR है. Okay, three things. Out, IN and ERR. HTTP IN used for interactive input. Out is used for output of printf. Interpreter's own prompt is error message goes to HTTP ERR. So now that means if it's error, it's HTTP ERR. If it's regular output, it's standard output. So this is standard error, this is standard output, and this is standard input. So these are three file objects which are predefined. कौन-कौन से है? Standard input है, standard output है, और standard errors है. So let's focus on these two output, error and this. Error and this. Let's focus on that. So I come here. So this time round, when I'm going to print the result, so I'm going to print some error message. So if I say print, this is a regular output. ये आ गया आपका this is regular output. पर अगर मैंने कहा this is an error, oh, although it's an error, it is coming onto the console only. So there is no difference between the two messages. So when I say this is a regular output, okay, we need to know about a module called as sys. So if I try and directly access it, sys.htdout, if I'm trying to access this error, I do not know what is sys. So I have to get that module in the current scope. So I say import sys. By saying import sys, I'm saying, okay, I want something from that sys module. So क्या चाहिए उस sys module से अभी? हमें उस sys module से चाहिए HTTP-OUT. So I say comma file is equal to sys.htdout. So array, so this output and this output is exactly same आने वाला था because sys.htdout is anyway by default, file का by default value sys.htdout होता है. I change the type saying sys.htderr. Now moment I see error, at least have you seen change in the color? देखो यहाँ जब error था, error का ये pink color में आ रहा था, this is also coming in the similar kind of color saying it's an error message now. So if there is an error, regular message ऐसा नहीं जाना चाहिए था. Regular message should go to HTTP-OUT. And if I have an error message, कहाँ दिया था मैंने error message? Oh, I did not give any error message. Yeah, this is an error. This is an error. So I will not send this to HTTP-OUT. I'll say file is equal to sys.htderr. Watch it. Error in red and regular output in other color. So if there is an error message that you want to send, you will send it to HTTP-ERR. If it's a regular output message, you will send to HTTP-OUT. Have you understood these two? ERR and OUT. So any regular message you would like to print, send it to HTTP-OUT. I'll tell you more about it. If there is an error message, always and always send it to HTTP-ERR. I'll tell you the reasons behind it, but always and always send it to HTTP-ERR. Quick feedback, समझ में आया नहीं आया, yes, no. कोई भी query है तो पूछिएगा. There are new terms that you're coming across. तो note करके लीजिएगा. 3 standard predefined strings. IN, HTTP-IN, HTTP-OUT, HTTP-ERR. IN stands for standard input. OUT stands for standard output. ERR stands for standard error. ये कहाँ से आ रहे? From module called as sys. Yes, please. Somebody had a question. Sir, what do you mean by send? Where are you sending? What do you mean by Send. pardon? You said send. Where are we sending that? कहाँ आ रहा है? आपको कहाँ दिखाई दे रहा है output? Sir, you said that send it to error, send it to output. Correct. तो मैं कह रहा हूँ मैं जब भी कुछ टाइप कर रहा हूँ आपको आउटपुट कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ जा रहा है अपना आउटपुट? कहाँ आ रहा है? Okay. Sir, you mean that on output device? आउटपुट डिवाइस. तो आपके Yes. इंटरेक्टिव प्रॉम्प्ट में कंसोल पे ही आ रहा है फिलहाल. हाँ, yes sir. करेक्ट. बट मैं चाहूंगा कि आउटपुट नेटवर्क पे चला जाए. मैं चाहूंगा आउटपुट फाइल में चला जाए. मैं चाहूंगा आउटपुट शुड गो टू सम अदर डिवाइस. दैट्स आल्सो पॉसिबल बाय स्पेसिफाइंग द फाइल. So sir, you mean by send that we are sending through that pipeline you said? Yeah, that pipe is connected to some output device. So by default the output device is monitor. So monitor तक पहुंचने के दो पाइप्स है. एक आउटपुट का पाइप है और एरर का पाइप है. बोथ ऑफ देम आर बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड टू द मॉनिटर. बट जब आउटपुट के थ्रू जाएगा रेगुलर मैसेज है, एरर स्ट्रिंग के जाएगा तो एरर मैसेज है. डिड यू सी द डिफरेंस इन कलर ऑन द आइडियली? Yes sir. बट Got it. बोथ ऑफ देम आर बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड टू मॉनिटर. Yes sir. Okay.
Now let me tell you more about it. अगर पहले डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, अगर डाउट है तो आगे नहीं बढ़ेंगे, because there is something very important I'm going to do. Sir, Yes, please. so is this like we are sending this output like, so if there is an error, we are sending it to like, Monitor via error stream. yeah, So no, streams, so think about mm. streams like pipes which are connecting. Seeing them like pipe which are connected to various devices. So I want output to be coming on the monitor. I want error also to be coming on the monitor. So both these are by default connected to monitor. But output का जो stream है, I can connect it to any other device. Error का stream will be always connected to monitor. So my question was like, if we are running any script and there is an error, so this std error, error, so this help us to find that there is an error in the script. No, it doesn't help you for anything. It is you as a person who is writing the scripts, your responsibility कि error आने पे जो message आपको display करना है, you have to pass that message to HTTP ERR so that it will never go unnoticed. It will always be displayed on the screen. I can Okay. suppress the output that is going to the monitor. I cannot suppress the output which is goes to HTTP ERR. There is one more. HTTP ERR is unbuffered. यानी उसमें एक कैरेक्टर भी डालोगे ना, वो तुरंत मॉनिटर पे चला जाएगा. HTTP OET बफर है. बफर का मतलब ऐसा समझिएगा, एक जो पाइप में कॉन्सेप्ट कह रहा हूँ ना, वो पाइप हमेशा ध्यान में रखिएगा. वो पाइप का कुछ एक स्पेसिफिक साइज है. जब तक वो पाइप फुल नहीं होता है या जब तक आप उसमें एंटर प्रेस नहीं करते हो, उसमें वो डेटा पड़ा रहता है. HTTP ERR का जो पाइप है, उसमें एक कैरेक्टर डाल दिया, वो फुल हो जाता है. फुल होते ही वो ट्रांसमिट कर देता है टू द डेस्टिनेशन डिवाइस. So That it's like means- streaming हाँ. and batch. Pardon? So it's like streaming and batch. It's like batch. I understood. First word. Streaming, like error is like streaming. So whenever it gets an error, it prints it on the console, or like where it has to be sent. And like std out, it's like batch. So once No, the it's batch not is batch. There's a slightly difference. It's buffered, not batch. okay, जब तक वो बफर फुल नहीं होता है, तब तक वो डेटा बफर में रह सकता है. okay, या बफर का आपको क्लियर करना होगा. okay, Okay, it's buffered, not batch. It's buffered. Batch means one after another, but ये one after आया हुआ मैसेज भी can fit into HTTP OUT. वो एक पाइप है, उसकी कैपेसिटी, जैसे पानी मार रहे हैं पाइप में, मोटर चालू किया है, तो पाइप का लेंथ अगर ज्यादा है तो कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर विल रिमेन इन द पाइप. yes, Yes. जब जब पानी फुल हो जाएगा, यानी और नया पानी आ गया, तो पाइप में जगह नहीं है, तो व्हाट विल हैपन टू द प्रीवियस आउटपुट. पहला जो पानी गया है उसके अंदर पाइप में क्या होगा? so it will throw it out. It is thrown out to the destination. Yes, So visualize HTTP OUT just like a pipe. It has some capacity. Till the time it doesn't become full, the data will just keep on filling in that particular pipe. When it becomes full, it will send the data to the destination. Okay. There is another way to empty the pipe. समझो pipe 1 meter का है, and 1 meter pipe में समझो 250 ml water can fit, है ना? So without filling the entire water, I can just hold the pipe upside down, and I can drain that. I can flush that entire pipe without adding any more water. right. So here also we can flush your stream without filling that particular buffer. So buffer में मैंने 5 ही characters fill डाले हैं. बफर का साइज काफी बड़ा है. बफर मतलब टेम्पररी मेमोरी काफी बड़ा है. वो अभी तक फुल नहीं हुआ है. उसका कैपेसिटी समझो 1024 बाइट्स है. आई एम नॉट नोइंग द एग्जैक्ट नंबर. आई विल हैव टू चेक. समझो 1024 के मल्टीपल्स नहीं रहेगा. इट विल बी लाइक 5 times of 1024 अप्रोक्सीमेटली. तो 1024 उसका 5 times करो, 5096 रहेगा. तो एटलीस्ट 5096 बाइट्स का बफर रहेगा. तो जब तक उसमें 5000 कैरेक्टर्स डालते नहीं तब तक वो फुल नहीं होने वाला है. ठीक है. तो आपको चाहिए तो बीच में आप उसे फ्लश कर सकते हैं. मैंने 5 ही कैरेक्टर्स डाले या 6 कैरेक्टर्स डाले, उतना ही काफी है. जस्ट सेंड इट टू द डिवाइस. HTTP ERR में ये सब कुछ करना नहीं होगा, बिकॉज इसका बफर का साइज 1 बाइट है. Okay, And moment you put something, it is full. Full है तो immediately destination पे जाएगा. So we can control the size of the buffers as well, but there are advantage of using error है तो error stream में डालिएगा. Regular output है तो HTTP OUT में भेजिएगा. अभी फिलहाल इतना याद रखो. If I want to give any regular messages, I'll always send it to HTTP OUT. And to send it to HTTP OUT, you don't have to take extra efforts, because by default print always sends the data to HTTP OUT. You just say print, this is a message. वो चला जाएगा regular message. It's an error message, then definitely say file is equal to sys.httrr. So take extra efforts only to send the error messages. By default, messages that you send through print will land up into HTTP OUT.
Okay. एवरीबॉडी ओके? देखो ये नए टर्म्स देख रहे हैं, आई नो देयर विल बी कंफ्यूजन, बट कंफ्यूजन तो पूछिएगा, आई मीन नो हरी टू रन थ्रू दिस. ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम्स आपको परेशान करेगा इन एवरी लैंग्वेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, बिकॉज एवरीवेयर दे यूज द सेम सी लैंग्वेज एंड दिस std err out comes from C language. It's अपना वो वहां से आया है गिफ्ट में हमारे पास. So all these you will come across again in C++, again in Java, because they all use stream. They all use stream. And believe me or not, all languages internally are dependent on C language to carry out these operations. तो C में स्ट्रीम से तो हर लैंग्वेज में स्ट्रीम से. Okay, but then let me show you the major difference between them. Suppose we had a file on the hard disk. Let me create a file. Suppose we had some file that is there at some location. Let me start with the console. At some location, I have a file. So let's say at some location we are, and I have a file. Suppose, let's say, let me go to C:\\. I go to cd10, and let's create a file over here. So I say, oh, copy on some file. या नोटपैड में भी आप क्रिएट कर सकते हैं. I'm just typing a command. या लिनक्स में होते तो you could have just said, what's the command to create a file in Linux? It's New VI or item. Pardon? touch, or we can use Correct. VI Yeah, edit. yeah, okay. VI या टच करके कर सकते थे. Very good. तो यहाँ विंडोज में मैंने कहा कॉपी कॉन. तो since Rahul has given the answer, let me give the file name as rahul.txt. तो rahul.txt नाम की एक फाइल है. तो कहते हैं एरर है. ओके, cannot find कॉन. ओ विंडोज में चाहिए, मैं पावर शेल में था गलती से. तो लेट मी गो टू विंडोज. अरे ये क्या हो रहा है? फाइल, command prompt, and I say cd\cd10 copy con rahul.txt, and I just say Ctrl Z. यहाँ एक फाइल बन गया rahul.txt. तो उसका साइज देखेंगे हम लोग. If I say dir rahul.txt, कहता है 0 बाइट्स का फाइल है, यानी उसमें अंदर एक भी कैरेक्टर नहीं है. 9:05 पे फाइल क्रिएट किया गया है. आज के दिन पे फाइल क्रिएट किया. There is nothing inside this file. This file is located at this address C:\10. ध्यान में रखिए. अब मैं क्या कहता हूँ? This file is already there, and I want to send the data to that particular file. So let's send this error message to that file, or let's send some message to the file. So I'll say this is message to be stored. And I say file is equal to, I say C:, let's see what happens, sir. C:10/rahul.txt. Now when I do this, does it really work? It says error. It says str object has no attribute called as write. It's a string. I cannot write to a string because double quotes में जो भी डालोगे वो string है. मैं कहता नहीं बाबा ये फाइल है, तो ये फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो उसमें जाके राइट करो. तो व्हाट आई लाइक डू इज आई विल से ओपन इज अ कमांड. तो ओपन फाइल ओपन कर सकते हैं. देखो नीचे हेल्प दे रहा है, एंड आई से ओपन. नाउ व्हेन आई राइट दिस, इट सेज नो 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 नो, अभी एरर और भी दे रहा है. इनवैलिड आर्गुमेंट C:10/10/so. अब ये क्या हो रहा है? इनवैलिड क्यों? मैंने तो आर्गुमेंट सही दे दिया ओपन के लिए. तो लेट्स ट्राई इट वंस अगेन. तो ये जो स्लैश है, मैं यहाँ 2 स्लैश डाल के देखता हूँ एंड से ओपन अप सच फाइल विद डबल स्लैश. कहता है नो नो नो, अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट राइटेबल. तो आई वांटेड टू ओपन दिस पर्टिकुलर फाइल फॉर राइटिंग. ये कहता है फाइल तो है अभी. एरर्स देखो कैसे चेंज हो रहा है. पहले कह रहा है इनवैलिड आर्गुमेंट बिकॉज /t विल बिकम लाइक टैब, /r विल बिकम लाइक कैरेज रिटर्न. तो अगर आप स्लैश यूज करें तो 2 स्लैश यूज कीजिएगा. 2 स्लैश मेंट फॉर 1 स्लैश. तो ये राहुल. या फिर 2 स्लैश यूज नहीं करना है तो एक सिंगल स्लैश यूज करना है तो फ्रंट स्लैश यूज कीजिएगा. लुक एट दिस, दैट विल नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम. आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल द एरर्स. अब यहाँ एरर क्या दे रहा है? अनसपोर्टेड ऑपरेशन. पहले एरर क्या दिया? ओएस एरर, इनवैलिड आर्गुमेंट. जब मैंने डबल में डाला या फिर फ्रंट स्लैश डाल दिया, देन एरर हैज चेंज. अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट राइटेबल. इसमें आप राइट नहीं कर सकते. चलो मुझे इसमें राइट करना है, तो मैं कहूँगा ओपन दिस फाइल फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग. तो मैंने कहा .w.
तो ये क्या हो गया, मैसेज तो नहीं आया इस स्क्रीन पे कुछ, दिस इज अ मैसेज टू बी स्टोर्ड, मैंने कहा फाइल इज इक्वल टू ओपन, और ये मेरा फाइल ओपन किया हुआ, उसमें जाके राइट करो, तो इट हैज गॉट रिटर्न टू दैट पर्टिकुलर फाइल। मैंने कहा ओपन करो, कौन सी ये फाइल, किस काम के लिए, राइट करने के लिए। चलो जरा का विंडोज में जाके देखते हैं फाइल में कुछ डेटा। राइट नाउ राहुल फाइल का साइज था 0 बाइट्स। अब जरा उसी फाइल का साइज देख लेते हैं, कितना कह रहा है, 30 बाइट्स। 30 बाइट्स में इसके अंदर क्या आ चुका है, लेट्स सी द कंटेंट टाइप rahul.txt, this is a message to be stored and a new line, so that has got stored inside the file। ये आपका this is a message to be stored। जरा इस फाइल को नोटपैड में ओपन करके देखते हैं, rahul.txt। so when you open up in notepad, can you see this message in the notepad, this is a message to be stored, can you see that everybody? Yes, sir. So what has happened now, we have sent the data to the file। तो हमने कैसे स्टार्ट किया, we gave the file name in double quotes, it took it as a string। तो कहता है ये जो आप दे रहे फाइल ये स्ट्रिंग है, एंड स्ट्रिंग इज नॉट राइटेबल, आई कैन नॉट राइट टू अ स्ट्रिंग। एरर मैसेज पड़ा करो। फिर मैंने जाना एरर मैसेज कैन नॉट राइट टू अ स्ट्रिंग, तो मैंने उसमें ना ये स्लैश जो था ओपन कहा, पहले लिखा था फाइल इज गुड, अब मैंने कहा ओपन। व्हेन आई सेड ओपन, वो कहता है इनवैलिड आर्गुमेंट, ये स्लैश टी नहीं चलेगा, स्लैश आर नहीं चलेगा, तो मैंने डबल टी डबल स्लैश आ गया, देन द प्रॉब्लम सॉल्व। इट सेड अनसपोर्टेड ऑपरेशन नॉट राइटेबल, यानी इसमें आप राइट नहीं कर सकते। तो मैंने फ्रंट स्लैश यूज किया, तो भी कह रहा अनसपोर्टेड नॉट राइटेबल, तो मैंने यहाँ w ऐड कर लिया, दैट मींस आई कैन नाउ राइट टू दैट फाइल। इफ यू फाइंड दिस थिंग कंफ्यूजिंग, तो व्हाट यू कुड डू, वॉच इट, देयर इज अनदर वे आउट। आई से माय फाइल इज इक्वल टू ओपन, आई ओपन अ न्यू फाइल। समझो इस बार देखो फाइल का सिंटैक्स दे रहा है मुझे, बफरिंग 1, एनकोडिंग कितना, एरर्स कितने, न्यू लाइन के लिए क्या चाहिए, क्लोज एफडी क्या चाहिए, ओपनर क्या चाहिए, विल सी दिस थिंग लेकर। इट सेज ओपन अ फाइल एंड रिटर्न अ स्ट्रिंग, यानी एक नई स्ट्रिंग देगा जिसमें आप राइट कर सकते हैं। एचटीडी ओयूटी एक स्ट्रिंग था, अभी आपको फाइल में राइट करने वाला स्ट्रिंग चाहिए। लेट्स से शंतनु का एक नाम की एक फाइल बनाते हैं। व्हाई एम आई टेकिंग योर नेम्स, बिकॉज यू विल बिलीव दैट दिस फाइल इज नॉट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, यानी ये फाइल एग्जिस्टिंग नहीं है। तो मैंने कहा एक फाइल क्रिएट करो, c:/temp में एक फाइल क्रिएट करो, shantanu.txt नाम की एक फाइल क्रिएट करते हैं, एंड दैट्स मेंट फॉर राइटिंग। एक फाइल हमने ओपन कर ली। अब जरा यहाँ जाके देखते हैं ऐसी कोई फाइल क्रिएट हुई है क्या। तो इफ आई से दिया है shan*, देखो यहाँ shantanu.txt नाम की फाइल क्रिएट हुई है 21/10 को, द फाइल हैज गॉट क्रिएटेड। So in the code I have said my file is equal to open so and so. So now we are having a reference called as my file that is referring to this file. अब मुझे इस फाइल में राइट करना है ना, तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। And I'm going to say now print, I'll say this is a message to Shantanu, don't mind if I misspell, मैंने यहाँ कहा my file, but my file क्या है, अरे my file is a file, तो ऐसे file is equal to my file। तो मैंने कहा फाइल इज इक्वल टू माय फाइल, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अरे डबल कोट्स गलत हो गया, तो अगर आपने सिंगल कोट से स्टार्ट किया है तो सिंगल कोट से खत्म करो। मैंने कहा फाइल इक्वल माय फाइल, कहाँ गया डेटा, आई जस्ट सेड फाइल इक्वल माय फाइल, तो दिस वाज अ मैसेज टू शंतनु। जरा जाके देखते हैं यहाँ, तो मैंने कहा यहाँ नोटपैड shantanu.txt, हाँ यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नथिंग एट ऑल। मैंने तो फाइल में भेजा है shantanu.txt में। Okay, let's see the size of that particular file. Here Shantanu कहता है 0 bytes. There is nothing that has got returned to that particular file. Okay, although I have opened that particular file for the purpose of writing, and I expected that data to be written to that file, correct? But I don't see any data to be written to the file. यानी उसके बफर में पड़ा है। तो I just say my file dot close, तो फाइल को क्लोज कर दो। तो मैंने फाइल क्लोज कर ली। अब क्लोज कर लिया तो यहाँ दोबारा जाके देखते हैं, अरे इसमें डेटा आ चुका है शंतनु में। Did you see the magic? So this will tell me, this is telling us, अब नोटपैड में देखो यहाँ आ गया, this is message to शंतनु। Yes. So what was the learning from this example that I showed? कोई बता सकता है इंटरप्रिटेशन आपने क्या समझा, इससे क्या हुआ? My file is a buffer. My file is a buffer where data is stored. When you close that, My it file, throws out the my file refers to the buffer of that file shantanu.txt, correct? So जो भी हमने मैसेज डाला था वो कहाँ पड़ा था? my file बफर में पड़ा था। But when I said close that file, then the data was transferred from the buffer to the file.
Is that okay? So every file has a buffer. Every file has a buffer. So till the time the buffer doesn't become full, till the time you do not close the stream, data will not get transferred from the buffer to the actual destination. Destination था shantanu.txt. और है कि अगर मैं उसमें न्यू लाइन ऐड कर लेता ना, then probably वो चला जाता. देखते हैं और एक बार try करके. Okay, let's do that. I go to this and close this. I go to notepad over here. I'll delete the file. Del shantanu.txt delete कर दिया फाइल. अब मेरे पास ऐसी कोई फाइल नहीं है shantanu.txt. There is no such file. Oh, आप देखो, मुझे क्या देखो, स्क्रीन देखो. I said del shantanu.txt and dir shan अभी कोई नाम नहीं है मेरे पास. shantanu नाम की कोई फाइल नहीं है मेरे पास. मैंने इस फाइल को डिलीट कर लिया. Is that okay, everybody? Yes. एक भी dir shantanu नाम की एक फाइल एक भी नहीं है मेरे पास. This time around I'm going to do something different. जरा ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं. अब इस फाइल में यही मैसेज मैं दोबारा भेजता हूं. I create this file. I send the message. Now, when I'm sending this message, where is the message going? This message का My file. destination Means my buffer. file. No. Okay, my file मतलब शंतनु में. My file is referring to shantanu.txt. ना? So will it go into the file called as shantanu.txt? Yes or no? Yes, Everybody sir. answer yes or no? नहीं, tick या cross कुछ तो डालो everybody. So will it go in the buffer? Will it नहीं? Just give a tick or cross. I'm saying it will go to the file called as shantanu.txt. Yes or no? मैं कह रहा हूँ shantanu.txt में वो डेटा चला जाएगा. मुझे आंसर चाहिए yes or no. जल्दी everybody has to answer. पृथ्वीराज. Okay, we have a tie. 6 people say yes, it will go to shantanu.txt and 6 people say no. तो जो पहला नो कहा है मोनिका, why is it not going? Where is it going then? Sir, because buffer is not yet full. Means हाँ, it is buffer is not yet full नहीं, वो हमेशा ही buffer में जाएगा. With every file there is a buffer which is associated. So it will go into the buffer, not to the actual device. Destination device में जाएगा. Device का एक buffer है, उसमें चला जाएगा. So no, nothing will be seen inside that file. File will get created, but file में कुछ data नहीं रहेगा. Let's cross check. Here I go. I'll do it once again. I wrote this data to the file, and we see this file has got created. But size कितना है फाइल का? कितना है? so wide. 0. Close the file. When I close the file, moment I close the file, the data will come inside this file. आ गया इसमें file में data. Yes, sir. So the data is transferred from the buffer to the file. Then the stream is closed. Stream close करो तो stream automatically gets flushed. So let us delete this file once again. ध्यान से देखो, मैंने फाइल को डिलीट कर दिया. मैंने दोबारा एक फाइल क्रिएट की. ये दोबारा फाइल क्रिएट की, दोबारा मैसेज भेज रहा हूँ. बट इस बार मैसेज में ना मैं यहाँ /n ऐड कर रहा हूँ, न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड कर रहा हूँ. सिर्फ इतना ही ऐड किया मैंने. अब मैसेज भेज दिया. जरा यहाँ जाके देखते हैं कुछ आ गया है क्या. स्टिल 0. यस. तो Yes. इसमें अभी भी 0 ही है. अब जरा इस फाइल को मैं लिखता हूँ my file डॉट क्लोज नहीं किया, FLUSH. उस फाइल के अंदर का जो बफर है उसको मैंने फ्लश कर दिया. फ्लश कहा. अब देखते हैं फाइल अभी भी 0. ओके. Yes, sir. Trying to send it to file called as shantanu.txt. It's still 0. तो यहाँ जाके देख रहा हूँ मैं फाइल में अभी तो कोई डेटा आ ही नहीं रहा है. तो लेट मी से my file डॉट क्लोज. जब मैंने इस फाइल को क्लोज कर लिया, अब जाके देखते हैं फाइल में डेटा आ चुका है. और 30 के बाद मैंने तो एक ही कैरेक्टर ऐड किया था न्यू लाइन. या 32 कैसे हो गया? 30 जो था पहले, ये 30 था. अब इसमें मैंने एक ही कैरेक्टर ऐड किया न्यू लाइन. ये 32 कैसे हो गया? Windows stores enter as two character. Store नहीं, translates. है ना. Windows always translates new line character Translate. into combination of carry return and line feed. CR carry return, LF line feed. New line actually line feed है, but it got translated into two characters, carry return and line feed. Okay, so when I close a stream, what is the data that is there in the stream has now been transferred to the destination device. Is that okay, everybody? Yes, sir.
किसी को डाउट है क्या? जस्ट क्विक फीडबैक, हैव यू अंडरस्टूड व्हाटएवर आई डिस्कस सो फार? थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं मैं, बट दैट्स हाउ यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू आर वर्किंग. What is that flush doing? ओके, फ्लश वाज एक्सपेक्टेड टू फ्लश द स्ट्रीम. यानी ऐसा फ्लश करो कि ताकि ये डेटा है ना जो स्ट्रीम बफर में पड़ा है वो निकल के डेस्टिनेशन पे चला जाए. लेकिन वहां पे हुआ नहीं. हुआ नहीं. आई वांट टू शो यू दैट हाउ इट कैन वर्क. तो सर फ्लश के अंदर वो Sir, ट्रू ऐसा- करना पड़ेगा क्या? पढ़े? तो फ्लश के अंदर हम लोगों को वो ट्रू मेंशन करना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, ये जो आपका प्रिंट है ना उसका हम्म। अगर बेसिक सिंटैक्स देखोगे आप तो आपको पता चलेगा. तो लेट मी जस्ट टाइप प्रिंट वंस अगेन एंड टेल यू व्हाट इज प्रिंट डूइंग. ये जो आप प्रिंट का टाइप कर रहे हैं ना, देखो जरा, ये आपको डिफॉल्ट्स बताएगा. तो जब मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ प्रिंट में, ये फ्लश का वैल्यू देखो क्या है बाय डिफॉल्ट. फॉल्स है. फॉल्स है. राइट. ओके, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको फ्लश नहीं करेगा, बाय डिफॉल्ट फॉल्स है. तो मुझे उसे ऑन करना होगा. तो मुझे कहना होगा भाई तू फ्लश कर प्रिंट को. तो बाय डिफॉल्ट ये ऑफ है. So I'll show you how to turn it on. That will see. But have you, other than that flush, have you understood that buffer ka concept? Every Yes. stream has a buffer, and Mhm. when I'm sending the data, it's not going into the destination device; it's landing into buffer. And from the buffer, when I close the stream, the data is transferred to the destination device. या buffer full होने पर आ जाएगा. Yes. Okay. Now let me give you an idea as to what can happen. I am going to redirect the output that I'm sending it to the file. So how do I redirect the output? Watch it. Okay, watch it. Redirection मैं सिखा रहा हूँ आपको. Redirection. So this is the first message. I say print. This is first message. अब अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, ये आउटपुट कहाँ जाएगा बताइए बाय डिफॉल्ट? आउटपुट कंसोल पे. फ्लटर आउटपुट कंसोल. नीचे देखो हेल्प दे रहा है वो. Print is the value to a stream or std2 by default. पढ़ पा रहे हैं नहीं? हाँ, आउटपुट मॉनिटर. तो ये कहा जाएगा बाय डिफॉल्ट std-out. डोंट से मॉनिटर, इट विल गो टू std-out. std-out इज बाय डिफॉल्ट कनेक्टेड टू मॉनिटर, इसलिए मॉनिटर पे आ रहा है. इज दैट ओके? ओके. ओके, ये आ गया मॉनिटर पे. दिस इज द फर्स्ट मैसेज. व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, अब ये अगर मेरा मैसेज है, ओके ये मेरा मैसेज है, और एक मैं छोटा सा स्क्रिप्ट लिखता हूँ. सपोज लेट मी राइट अ स्मॉल स्क्रिप्ट फॉर यू. वॉच इट. आई एम गोइंग टू राइट अ स्मॉल स्क्रिप्ट फॉर यू. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की जगह आई विल राइट अ स्क्रिप्ट. इन दिस स्क्रिप्ट आई विल से प्रिंट दिस इज फर्स्ट मैसेज. ये मैंने डाल दिया. ध्यान से देखो, इस फाइल को हम लोग सेव करते हैं. लेट्स सेव दिस फाइल. Where do I save the file? I save this file in 10 folder. 10 time. C column में हमारे पास एक temp नाम का folder है. And it's a Python file, so I'll go to Python. कोई दिखाई दे रहा है Python? It's a Python file. फाइल का नाम देते हैं टेस्ट. सो टेस्ट नाम की एक फाइल है. सो दिस इज प्रिंट. दिस इज द फर्स्ट मैसेज. अब हम लोग कंसोल पे चलते हैं. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद पाइथन. आई स्टार्ट विद पाइथन. ओ पाइथन में मुझे वो स्क्रिप्ट रन करना है. यहाँ वो फाइल है dir star.py. तो मेरे पास ये फाइल है यहाँ. कैन यू सी दिस test.py? Yes, sir. ओके, अब अगर मैं रन करना चाहता हूँ स्क्रिप्ट, आई जस्ट से पाइथन test.py. आगे दिस इज द फर्स्ट मैसेज. Yes. वॉच इट वेरी केयरफुली. मैंने कहा दिस इज अ टेस्ट मैसेज. ये जो आउटपुट है ये मैं रीडायरेक्ट करना चाहता हूँ टू सम फाइल, मे बी sanjay.txt. कुछ आया मॉनिटर पे आउटपुट? उस पे स्टोर होगा. नो सर. मॉनिटर पे आया कुछ आउटपुट? नहीं. नहीं. द आउटपुट हैज बीन रीडायरेक्टेड टू अ फाइल कॉल्ड एज sanjay.txt. जरा sanjay.txt में क्या है देख लेते हैं. नोटपैड sanjay.txt. Again, this is the first message in sanjay.txt.
सर Yes. मतलब वो पाइपलाइन शिफ्ट हो गया ना? पाइप को मैंने रीडायरेक्ट कर लिया, जो पाइप हाँ, मॉनिटर की मतलब, तरफ जाना चाहिए था, हाँ, मैंने वो उसे संजय, रीडायरेक्ट कर लिया टू फाइल कॉल्ड एज sanjay.txt. इज दैट ओके? यस सर। अब मैं स्पेसिफिकली कहता हूँ यहाँ, ये आउटपुट शुड गो टू std.out, comma file is equal to sys.std.out. but ये sys क्या है उसे पता नहीं होता है, तो I'll have to get the sys in the current scope. To bring the skip, make sys available, I'll have to say import sys. एक मॉड्यूल है, रेडीमेड मॉड्यूल है पाइथन में, तो मैंने कहा import sys ताकि मैं sys.stdu कह सकूं. और ये फर्स्ट मैसेज था, तो दिस इज द सेकंड मैसेज, ये मेरा सेकंड मैसेज है. अब मुझे बताइए, इफ आई नाउ राइट द सेम स्टेटमेंट, क्या होगा? कौन सा मैसेज कहा जाएगा? फर्स्ट मैसेज कहा जाएगा, सेकंड मैसेज कहा जाएगा? एनी गेस? सेकंड कंसोल पे आएगा हाँ, और फर्स्ट संजय डॉट टीएक्सटी में जाएगा. एवरीबॉडी एग्री टू दैट? नो सर, फर्स्ट दोनों Second मैसेज one- सर संजय डॉट टीएक्सटी में दोनों जाएगा. सेम जगह पे ही होंगे, जैसे संजय दोनों सेम ही है, बिकॉज यहाँ भी बाय डिफॉल्ट फाइल sys.stdu होता है, तो बोथ द मैसेज विल गो टू दैट फाइल. लेट्स चेक इट आउट. दोनों मैसेज फाइल में आ गए? Yes. Yes or no? Yes. Why did that happen? Because the default device destination क्या है for print? System. स्टैंडर्ड यही तो है. स्टैंडर्ड आउट. Correct? अब मैं थर्ड मैसेज भेजता हूँ. HDERR, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड है. थर्ड है, तीन मैसेज है ये. अब जब दोबारा रन कर लेते हैं स्क्रिप्ट, देखो क्या हुआ. थर्ड मैसेज हैज कम ऑन टू द स्क्रीन Yes, sir. and the first two message have gone to the file. Have you understood this? Yes, sir. Yes, sir. So what is the learning? Sir, you did not put the name na sanjay dot txt. क्या बात Then है? why did it go there? क्या बात कर रहे हो? मैंने नहीं लिखा, नहीं लिखा. Sir, मैंने. after that sentences in यार देखो, इस प्रोग्राम, इस स्क्रिप्ट है, ये रन कर रहा है. इस स्क्रिप्ट के आउटपुट को मैंने रिडायरेक्ट किया. कहाँ रिडायरेक्ट किया? okay sir. ओएस का बिहेवियर था रिडायरेक्शन. अरे हमने ये रिडायरेक्शन स्क्रिप्टिंग में भी देखा था ना, रिडायरेक्शन. हाँ सर, वो Yes, कंफ्यूज हो गया था. हाँ, रिडायरेक्ट किया मैंने sanjay.txt को. रादर std.out भी देखा था हमने, या नहीं? Nice, sir. नहीं, ठीक है, नहीं. ठीक है. So tell me what was the learning over here? क्या समझा आपने? Anybody? श्वेता बताइए Standard. क्या, एक मिनट, श्वेता बताइए लर्निंग क्या था? श्वेता लर्निंग क्या था? श्वेता, आई कैन नॉट हियर यू. लर्निंग क्या था आपका? क्या समझा आपने यहाँ? गलत सही जो भी है बताइए. Sir, maybe it's headphones issue. श्वेता, वी कैन नॉट हियर यू. आप बात कर रहे हैं, हमें सुनाई नहीं दे रहा श्वेता. ओके, आप चेक योर सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कह रहे हैं. ओके, तो सुनीता बताइए व्हाट इज द लर्निंग ओवर हियर? So I cannot define completely, but this is all about, like you have mentioned, there are three types of input, output, and error message. So there is some buffer created first. Once नहीं, the इतना डिटेल में नहीं. ये जो लास्ट एग्जांपल लिया इसका, इससे क्या आपका लर्निंग था? लास्ट पार्ट जो मैंने समझाया, स्क्रिप्ट जो रन किया. Acha, because that error, it was the error message. Third message was the error message. That's why it got like it was there on the screen, and the other two messages, it went in the file sanjay.txt. That was that was observation. लर्निंग क्या था उसमें? वो तो आपने जो किया वो दिखाई दिया, आप बता रहे, बट मुझे चाहिए लर्निंग क्या था. पंकज आप बताइए.
सर तो लर्निंग ये था कि जो डिफॉल्ट फाइल थी हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट वो एज ए प्रिंट कर कर हमारा जो डेस्टिनेशन था, लाइक आपने जो पाइप बोला था मेरे, वो आपने चेंज कर दिया था, राइट? तो फाइल में चला गया, लेकिन स्टैंडर्ड एरर थी, पाइप हमारी नहीं चेंज अपनी, तो इस कंसोल पे आ गया। करेक्ट, बट कुड यू सम पुट इट इन करेक्ट वर्ड्स? आपने सही बताया तो सही, बट एकदम प्रिसाइज वर्ड्स में चाहिए. एनीबॉडी वुड लाइक टू टेक अ चांस? यू हैव सेड करेक्टली, बट है ना, आप एक्सप्रेस जब करते हैं ना तो कोशिश करो कि किसी का समय पास है, समय नहीं है आपको समझ के लेने के लिए. तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ द राइट वर्ड्स एंड बी वेरी क्लियर. आई वाज हियरिंग टू यू कीनली, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे समझ में आ गया आप क्या कह रहे हैं. बट यू हैव टू मेक अ राइट चॉइस ऑफ द वर्ड, सो देयर इज नो एम्बिग्विटी इन व्हाट यू एक्सप्लेन. ये बहुत जरूरी है आपके लिए करियर वाइज. बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट टू कन्वे. ओके, ऑल्दो योर आंसर इज राइट, बट इट साउंडेड एज इफ इज रॉन्ग, बट सही था आंसर. बट आपने सही और अच्छे वर्ड्स यूज करते तो बेटर था. एनीबॉडी एल्स? Sir, you redirected the pipeline path. No, don't tell me what I did. What was your learning? So we can redirect the path from file. The default one is standard output. So we can change it to other files also, and the output will go in that file. No, that was not, that was a part of it. अभी उसने बताया था पंकज ने, वही आपको अच्छे वर्ड में. एनीबॉडी एल्स? So, sir, standard output actually, I mean, separates the data, that is the pipeline that we have created. So standard output is redirecting the data to the output device. So if it was only print, it would come on monitor, but we have redirected to the file. So it went into the file, but and the standard error. So like standard error should be, so it was not redirected. Like बस इतना ही बताना था. लर्निंग यही था. आउटपुट इज रीडायरेक्टेबल, चाहे तो रीडायरेक्ट कर सकते हैं, एरर को रीडायरेक्ट नहीं कर सकते. दैट वाज द लर्निंग. श्वेता, वर यू ट्राइंग टू से द सेम थिंग? हाथ से बताओ, यस और नो. हाँ, ओके. तो output is redirectable, error stream is not redirectable. Output you can send to any message, any device. I showed it to a file, I can send it to printer also. मैं printer को भेज सकता हूँ. अब मेरे मशीन में printer connected नहीं है, अगर printer connected होता ना तो ये output में मैं printer को भी भेज सकता था. Let me just give a glimpse about it. तो अगर मैं कहता ये जो output है ना, ये यहाँ मत भेजिएगा, printer को भेजिएगा, तो PRN. अभी वो कहता है cannot find the file specified. कौन सी फाइल नहीं मिल रही इसे बताओ जरा. Printer. Printer, because printer is also fine. I said all output devices are fine. तो फिलहाल मेरे मशीन को प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, तो इसे cannot find the file PRN. तो PRN अगर होता तो first two message will go to the printer, but the third message will come onto the console only. इसका मतलब ये है, if I am sending some error messages, they will always come to the attention of the user. It will not get saved on the hard disk, not to go to the printer. It will always display on the console. That means STD-ERR by default is not redirectable. आप उस पाइप को आपके आउटपुट डिवाइस छोड़ के किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो. STD-ERR को STD-OUT you can connect to any other device. You can redirect it. So STD-OUT is a stream. By default, it is connected to monitor, but you can unplug from the monitor and redirect it to any other device. So STD-OUT note करके रखो. STD-OUT is redirectable. STD-ERR is not redirectable. Any message that you send to ERR will land up onto your default output device defined by your environment. That's normally the monitor. STD-OUT can be redirected to any output device. Any output device. Any means any output device. Even to internet का network stream पे भी आप redirect कर सकते हो sir. so, like sir, you said कि every device is a file, right? Every device is a file. Yes. Yes, anybody else has to say anything or ask any question?
रोहित इज ड्राइंग कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेजेस। वो कहता है सी प्लस प्लस में लाइब्रेरीज होते हैं, रोहित सी प्लस प्लस में हेडर्स होते हैं, जावा में पैकेजेस होते हैं, तो वैसे पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं। दैट्स परफेक्ट। सो लाइब्रेरीज को, लाइब्रेरी इज अनदर वर्ड फॉर पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स एंड सो ऑन. But in C++ we have various headers. In Java we have packages. Similarly in Python also we have modules. Okay, modules or packages दोनों होते हैं Java में, Python में. And sir, what is the difference between them? Yes, sir. Packages. Should I answer right now? Collection of modules is a package in Python. So language to language. आप वही पूछ रहे थे ना? Yes. Collection of modules, collections of files and a collection of functions and classes is a module. Collection of modules is a package, and collection of packages is an application. ऐसा समझिए आप. Sir, एक बार आप फिर से बताइए, मैं नोट कर लूँ. Collections of functions or classes we create a module. Collection of modules is a package. Okay. So package organizes modules, and modules organizes functions and classes. So pandas जो है ये मॉड्यूल है ना? Pandas जो है ये मॉड्यूल है, उस मॉड्यूल में कई सारे क्लासेस और कई सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज करके दिए हैं आपके लिए. सर एक पैकेज का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? आपने दो pandas, अभी sys लिया हमने, import sys किया, हाँ हाँ. तो वैसे pandas, numpy ये सारे मॉड्यूल्स हैं. नहीं, पैकेज का. पैकेज के हाँ. पैकेज हम लोग जब एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं तो हाँ. एक पैकेज से, एक मॉड्यूल से काम नहीं बनता है, करेक्ट? राइट. इन एन एप्लीकेशन आई हैव मल्टीपल मॉड्यूल्स दैट आई एम यूजिंग. मैं pandas भी यूज करूंगा, मैं numpy भी यूज करूंगा, मैं sys भी यूज करूंगा, करेक्ट? तो मुझे चाहिए इन सबको मैं एक पैकेज में बंडल करूं सो दैट आई कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू माय क्लाइंट. तो जब कोई एप्लीकेशन बनाते हैं आप, तो यू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज दोस मॉड्यूल्स इनटू अ पैकेज व्हिच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू योर क्लाइंट. And I'll teach you how to package. So package is collection of various modules. Yes. Or related modules which are required for your application. And it can always change from one application to another. So every Sir. Python application that you create is nothing but a package. Now, Sir, libraries are known as modules na, in Python. आप अभी फिलहाल Python में हो, so there is no such concept as library. You say modules and packages. But sir, are they similar? Pardon? They are similar. Now, in what context have you used the word libraries? कौन से language से compare कर रहे हैं? Sir, if we use it while coding, we use libraries. That way. दूसरा कौन से language के साथ compare कर रहे हैं? Python. नहीं, Python को कौन से language के साथ compare कर रहे हैं? So we were writing before. I'm not saying about any language. नहीं, अभी ये जो क्या कहते हैं, pandas, numpy, scipy या फिर TensorFlow, Matplotlib, scipy, PyBrains, अब सब इनको standard libraries ही कह सकते हैं Python के. You can call them as library also. So actually the term library is collection of various modules. तो आप कैसे उसको डिफाइन करते हैं उस पे है. एंड लाइब्रेरी में अगर विंडोज में वगैरह है ना, लाइब्रेरी वगैरह बना रहे, तो विल हैव समथिंग कॉल्ड एज DLL फाइल्स, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज. ओके, सो ये डिपेंड करता है इन विच लैंग्वेज आर यू टॉकिंग अबाउट. ओके, तो सर in Python, like number of modules is gives a library, right? Yeah, you can say number of modules is library because Library and packages similar. yeah, or because it provides you collection of modules, not too many things. Okay. But Python, we avoid using the term library. We either say modules and we say packages. But if somebody is saying library, he's probably meaning it's collection of various modules. So use the term library. Yes. Is that okay? Yes. Any other query, anybody? No, sir.
So we saw a function called as print. But there is something more that I want to show you in this function called as print. Now, don't ask me all the things for a moment. So let us take one example at a time. Okay. So suppose we are carrying out some kind of operation. Okay. And in that particular operation, I would like to print the data. But this data that I want to print can come from any place. Can come from any place. It is not necessary that it has to always come from the keyboard or through the program and so on. So let's do some very interesting stuff. Pay attention, huh? Something very interesting that I do. Last time we sent the data to a file called as shantanu.txt. Sanjay, so gaya? Sanjay, don't sleep. I know you must be tired coming back from the office. इसका ये मतलब नहीं सो जाओगे? Camera on चाहिए, so I can wake you up at least. And I don't mind if I am required to wake you up. But camera बंद रखोगे तो पता नहीं चलता आप सो रहे हैं क्या कर रहे हैं. Okay. And I never scold somebody who sleeps by turning on the camera. But camera बंद करके सुन भी रहा है ना, तो मुझे उस पर डाउट है. सर Yes, please. सर लास्ट 5 मिनिटात काय केलं ते सांगा ना मी डिस्कनेक्ट. हॅलो लास्ट 5 मिनिट काहीच केलं नाही. ते प्रश्न डिस्कस करत होतो. विराज विचारला लायब्ररी आणि पॅकेजेस एकच आहे का? तो प्रश्न होता. Nothing else. Nothing Okay, more has been discussed. ओके Okay, you are disconnected? यस सर यस Were you disconnected, Kaustuv? यस सर यस Okay, you are disconnected. Sanjay was sleeping. I even in the regular class, कोई मेरे क्लास में सो जाता था ना, मैं उसे कभी डिस्टर्ब नहीं करता था. The reason is I had a bad habit of sleeping in my class, and none of my teachers throughout my education, like college time, punished me for sleeping in the class. तो मेरा ये है कि अरे आपने तो कभी punish नहीं किया किसी टीचर ने, I'll also not punish. I just share one story. Our college, like it is like old building structures kind of thing. And my classroom used to be P2, P1. That is, physics department was called as P1, P2, P3. And the room height is like 40 feet kind of thing. It's like those classrooms that you see in the movies, na? That kind of classroom. 40 feet, British time buildings, thick walls. बाहर कितनी भी गर्मी हो ना अंदर AC चलते ऐसा लगेगा kind of thing. Those walls are very thick. And next to the classroom, there was a playground. So on the playground there are a lot of trees also in the surrounding. So cold breeze used to flow. Physics का lecture होता था exactly after lunch. तो lunch के बाद after you have food, sitting for the classroom, challenge ये नहीं था teacher क्या समझा रहा है वो समझ रहा है नहीं. आंखें खुली रखना challenge हुआ करता था. If I keep the eyes open throughout the lecture, that's a challenge. When the cold breeze is blowing and you are full पेट खा के बैठे हो classroom में. And a lot of times, not just me, many of us used to doze off. And अंधेरा था classroom में, only board पे lights. बाकी एकदम best time to sleep. So I slept one day. I slept a number of days, but one day when I slept, the teacher kept a note right in front of me, good morning करके. And she said not to disturb this fellow, let him sleep. So when he wakes up, please ask him to meet in the teacher's room. So whenever I went to teacher's room, he said, "मैंने कहा मुझे अरे थोड़ा light खाया करो, इतना भी खाओ मत, please सो जाओगे." Okay, so break your lunch into 2 parts. थोड़ा सा lunch time में करो, थोड़ा evening में खाओ. इतना खा के कोई सोता है क्या? तो संजय थोड़ा सा कम खा के lecture में बैठो. Okay, but nobody punished me. And several teachers caught me sleeping, but nobody punished me. So I also never scold somebody who punished. But कोई है और ध्यान नहीं दे रहा है, that's wrong. ये तो natural instinct है ना सोना. Okay, I don't mind. So इसलिए camera on रखो, तो if you sleep, I can wake you up. Okay, camera बंद मत करो. Okay, so I was going to show you something very interesting. ये आपकी फाइल थी, तो हमने ये फाइल ओपन कर लिए, and to that file we are sending some data. So we are writing to the file. Likewise, अगर मेरे पास कोई already written file है, let's create one file. Suppose हमारे पास एक फाइल है, and let's create one file. Let's say I have a file called as, let me see if I have some text file there star.txt. तो है हमारे पास कई सारे फाइल्स है. Okay. Let's see what is there in this file called as aaa.txt. कोई भी ऐसी फाइल है. So I say type aaa.txt. इसके अंदर कुछ तो garbage है. Some data. Can you see that, everybody? Yes, Okay. sir.
तो Yes. पाइथन में वो फाइल, ये मैसेज मुझे प्रिंट करना है, उस फाइल के अंदर का डेटा प्रिंट करना है. तो व्हाट आई कुड डू, आई कुड जस्ट से प्रिंट, आई कुड जस्ट से ओपन दैट फाइल. कौन सी फाइल ओपन करो, aa.txt. कहाँ है वो फाइल aa.txt? वो है C कोलन के अंदर, टेम्प फोल्डर के अंदर, there's a file called as aa.txt. ये ओपन करो. तो मैंने कहा ये फाइल को ओपन करो, कॉमा, बस ओपन किया. अब ओपन करके क्या करना है, उसके अंदर का डेटा रीड करना है. तो मैंने कहा इसे रीड करो और प्रिंट करो. तो देखो दिस. सो व्हाट हैज इट डन, इट हैज ओपन दिस फाइल, इट रेड द कंटेंट्स ऑफ द फाइल. जो उसने रीड किया वो आपने प्रिंट कर दिया. तो वी कुड प्रिंट द डेटा दैट हैज बीन रिटन टू दैट फाइल. तो फाइल में जो कंटेंट था वो हमने रीड करके प्रिंट कर दिया. तो वी कैन सेंड द डेटा टू द फाइल, वी कैन ऑल्सो प्रिंट द डेटा ऑफ द फाइल. वी जस्ट हैव टू से ओपन. और एक आपने नोट किया, मैंने यहाँ बताया नहीं मोड क्या है, रीड है या क्या करना है बताया नहीं. तो आई कुड से दैट एज वेल. तो ये जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था, तो आई कुड जैसे कॉमा रीड, जैसे W फॉर राइटिंग था तो रीड फॉर राइटिंग था, रीड फॉर रीडिंग था. बट बाय डिफॉल्ट रीड ही करता है फाइल. तो आई कैन जस्ट से रीड, ओपन फॉर रीड मोड, एंड आई कुड रीड द कंटेंट्स ऑफ द फाइल. तो ये फाइल के अंदर का डेटा उसने प्रिंट कर दिया. हैड आई नॉट कॉल द फंक्शन रीड, तो क्या होता है देखते हैं. अगर हमने ये रीड फंक्शन नहीं कॉल किया होता, इट वुड जनरेट नो एरर. It is actually giving you information about that particular file. कि फाइल क्या है, इसका मोड क्या है, इसका एनकोडिंग क्या है, तो कौन से टाइप का फाइल है. So I don't want the, I want the contents of the file, not the information of the file. तो कंटेंट चाहिए था, तो मैंने उस फाइल को रीड करने के लिए कहा. So it has read the contents of that file. So कहता है ये फाइल है, रीड मोड में ओपन किया है तो उसे रीड करो, एंड द रीड क्या आउटपुट इज नाउ टू बी प्रिंटेड. तो हमने उस आउटपुट फाइल को ओपन करके रीड करके उसका आउटपुट प्रिंट कर दिया. तो वी कैन राइट टू अ फाइल, we can also read from a file. So we can, it's not necessary that we always send a message. We maybe some data is there in the file, so we can quickly use a function called as open and read the content from the file as well. Have you understood this, everybody? Yes. Okay. So I'm going to run a script for you, a small script. And we're going to see what is happening when I run that particular script. Okay, so I have a file called as demo. So I'm going to run this script for you. Let's see what happens when I run this particular script. Okay. I'll just explain you slightly, yeah? But I know for sure we have not reached a stage where we know concept of loops and anything in Python. Huh? But my objective is not to explain the concept of loop right now. आप है ना बिहेवियर की तरफ ध्यान दीजिएगा. वो होल्ड ऑन, सो डोंट गेट बॉदर अबाउट सर ये क्या लिखा है आपने, उससे कुछ मत फोकस कीजिएगा. अपने को प्रिंट समझना है, तो जस्ट फोकस ऑन द एस्पेक्ट ऑफ प्रिंट. आई एम ट्राइंग टू कन्वे समथिंग. मैं कोई मैसेज आपके साथ पास करना चाहता हूँ, उस पर फोकस कीजिएगा. सो डोंट गेट बॉक डाउन विथ मैं क्या लिख रहा हूँ. तो माई आइडिया इज आई वांट टू राइट अ स्मॉल प्रोग्राम जो एक एक करके नंबर्स प्रिंट करेगा. लाइक नंबर लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स प्रिंट करेगा, एक के बाद एक नंबर प्रिंट करेगा. लिसन टू मी. और मुझे चाहिए दो नंबर्स के बीच में वो जरा गैप ले ले, टाइम ले ले. यानी नंबर प्रिंट करे, पहला नंबर, देन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, एक एक करते हुए नंबर्स प्रिंट करे. इज दैट ओके? माय ऑब्जेक्टिव? यस. तो 1 प्रिंट करना चाहिए 1 सेकंड गैप, 2 प्रिंट करना चाहिए 1 सेकंड गैप, 3 प्रिंट करना चाहिए 1 सेकंड गैप, 4 प्रिंट करना चाहिए 1 सेकंड गैप. तो दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टू डू. ये मैं चाहता हूँ. तो हमने क्या किया है, वी हैव यूज्ड अ मॉड्यूल कॉल्ड एज टाइम. टाइम मॉड्यूल एक इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है. इट कैन सस्पेंड द ऑपरेशन दैट वी आर ट्राइंग टू परफॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल. जब मैं इसका एक ग्लिम्स दिखाता हूँ आपको पहले, एंड देन वील यूज द मॉड्यूल. तो जरा ध्यान दीजिएगा टुवर्ड्स माय कोड. एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर. आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू वेरियस मॉड्यूल्स. तो यहाँ हम आउटपुट पे है. तो मैंने अगर कहा प्रिंट 1, तो 1 immediately gets printed. Yes? Yes or no? Yes, sir. Okay. I say import time. Time में एक very interesting function है called as sleep. मैंने कहा sleep for 5 seconds. देखो क्या हुआ.
1001, 1002, 1003, 1004, 1005. अभी खत्म आ गया? Can you see that prompt appearing after that? कुछ दिखाई दिया आपको? मैं दोबारा रन करता Yes, हूँ. sir. ये देखिए 5 सेकंड्स के लिए कुछ नहीं कर रहा है. 5 सेकंड के बाद वो prompt आ जाएगा. Can you see that difference? Yes, sir. Yes, Did sir. you notice this prompt appearing after 5 seconds? जल्दी करता हूँ. मैंने कहा sleep for 3 seconds. देखो आ गया. Yes. Yes. तो स्लीप क्या कर रहा है? आपका जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है उसे सस्पेंड कर रहा है फॉर दैट मच टाइम इंटरवल. सो टाइम एक मॉड्यूल है दैट इज अ फंक्शन कॉल्ड एज स्लीप दैट विल सस्पेंड योर ऑपरेशन फॉर दैट मच टाइम इंटरवल. इतने टाइम इंटरवल के लिए आपका ऑपरेशन को सस्पेंड कर देगा. इज दैट ओके? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So just to give you an idea about how it is really working, let me go back to the script that you had previously written. तो हमने एक स्क्रिप्ट लिखा था पहले. वो जो दिस इज द फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, क्या नाम दिया था उसे? क्या नाम दिया था? test.txt. Test dot. हमने वो लिखा था दिस इज द फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, क्या था वो? Test Test dot. dot test. test.txt. Okay, so let's open up that file called as test.txt. Test.txt नहीं, test.py है ना? TXT. Yeah. Yes. Test.py. test.py. It is test.py. Pay attention there. अब जरा ये समझने की कोशिश कीजिएगा. तो every day you will have to learn a lot of things. So you have to be very very watchful and make a note of what all things we are discussing. ये आपका प्रोग्राम था, स्क्रिप्ट था. Import sys, this is the first message, second message, third message. Yes, Yes. everybody. Yes, sir. How do I run this script? बताइए मुझे जरा ये स्क्रिप्ट कैसे रन करूँ अगर मुझे रन करना है तो. Python test.py. Python, very good. Python Test.py. 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 क्या हुआ? तीनों में से एक साथ आ गए. Yes, sir. Okay. Yes. पे अटेंशन ना. अब मैं क्या कहता हूँ, इम्पोर्ट सिस के साथ साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ इम्पोर्ट टाइम और यहाँ लिखता हूँ टाइम डॉट स्लीप फॉर 4 सेकेंड्स. यानी हर मैसेज के बाद मैं स्लीप करने वाला, हर मैसेज के पहले भी स्लीप करने वाला. 4 सेकेंड 4 सेकेंड 4 सेकेंड्स. अब देखते हैं क्या हो रहा है. ये सेव कर लिया. अब इस स्क्रिप्ट को दोबारा रन कर लेते हैं. 1001, 1002, 1003, 1004 पहला मैसेज. 1001, 1002, 1003, 1004. 1001, 1002, 1003, 1004. आगे सस्पेंड का मतलब पता चला. हाउ डज इट वर्क? So it is Yes. suspending the operation for Yes, that much time interval. That means between the first sleep and the second sleep, this is a message. So this message got printed after 4 seconds. Then again it suspend the operation for 4 seconds. Then again the message has got printed. So have you all understood this sleep function? Sir, you can write Yes. time and then the number also, na? So is writing sleep is compulsory. Compulsory. Okay. So sleep is a function, time is a module. So you cannot run the module. You will run the functions inside the module. तो मॉड्यूल का नाम टाइम है और उस टाइम मॉड्यूल के अंदर फंक्शन है called as sleep, the one that I have used. Sir, Everybody- import केलं होतं का? Pardon? Time import केलं होतं का? Without that, it will never work. Can you see this at the top? Okay. Yes, yes. मैंने दोनों इंपोर्ट किए, सिस एंड. पंकज, शंतनु, क्या डाउट है दोनों को? नहीं सर. तो टिक मार्क करो. शंतनु, सर वो सर जो स्लीप का जो डिफॉल्ट आर्गुमेंट का जो सेकंड्स रहता है वो सेकंड्स में रहता है मिलीसेकंड. रिपीट रिपीट. अभी हमारा सेकंड था. अरे रिपीट करो. सर स्लीप का जो स्लीप में जो हमने आर्गुमेंट दिया राइट, हाँ तो वो एज ए सेकंड लिया उसने राइट. करेक्ट. अगर हमें मिली सेकंड में देना होगा तो We will come to it later. You can explore the module called as time. So that can be done. पहले ये sleep का purpose समझ में आया कि नहीं वो मुझे बताओ. स्लीप का Every- पर्पस हम Yes. हाँ sleep का purpose because आप अपने को जो देखना है ना उसके लिए वो sleep जानना जरूरी है कि how does sleep work? What is the purpose of this particular function called as sleep? Because there are number of ways we could actually work. So
my purpose over here is something different, what I plan to do. Okay. Sir, in ideally also you wrote time sleep. अरे कहाँ लिखते हैं उससे मतलब नहीं है, पाइथन का कोड कहीं भी लिखो, इट्स वन ऑफ द सेम। आइडियली एक एनवायरनमेंट है जहां मैं टाइप कर सकता हूँ और कुछ नहीं। सर वो चेंज होगा Change अलग मतलब? अलग। नहीं, उसका बिहेव मतलब- वही रहेगा, स्लीप फॉर 4 सेकंड कहीं भी लिखो, इट इज स्लीप फॉर 4 सेकंड। No sir, time and sleep both are compulsory everywhere. नहीं यार, कंपल्सन की कोई मतलब नहीं है। मुझे 2 मैसेज के बीच में 4 सेकंड का गैप चाहिए था, इसलिए मैंने टाइम डॉट स्लीप कहा। सर टाइम के बाद डायरेक्ट नंबर लिखना लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, मैंने बताया ना, नहीं लिख सकते, पहले ही बताया नहीं लिख सकते। इट हैज नो मीनिंग टाइम के बाद डायरेक्टली नंबर। टाइम मॉड्यूल का नाम है, मॉड्यूल के अंदर वो पैकेज है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ओके सर। ओके, सो एक मॉड्यूल है, उसके अंदर कंपोनेंट्स है, वो कंपोनेंट यूज करना चाहता, स्लीप नाम का एक फंक्शन है, मैं उसे यूज कर सकता हूँ। टाइम ऑफ 4 विल नॉट वर्क, ठीक है। ओके, टाइम मॉड्यूल, आई कैन शो यू टाइम मॉड्यूल, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। अपना दोस्त अभी पूछा था मिली सेकेंड, किसने पूछा मिली सेकेंड? चंतु ने। अरे मिली सर, क्या, मैंने नैनो सेकंड पूछा तक जा सकते हैं अगर टाइम में जाना है तो, बट वो आउट ऑफ स्कोप जा रहा है, मुझे जो दिखाना है वो रह जाएगा। टाइम, टाइम में गए, एंड अगर मैं स्लीप कहता हूँ तो मेरे पास फंक्शन स्लीप है। अभी आपके पास नैनो सेकंड भी स्लीप कर सकते हैं आप चाहे तो, बट स्लीप में आप सेकंड पास कर सकते हैं, कैन सी दैट। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शन है, स्टार ऑफ टाइम, फॉर्मेटिंग ऑफ टाइम, ये ऐसे टाइम डॉट टाइम भी है। टाइम में नैनो सेकेंड्स में भी टाइम आ सकता है, थ्रेड का टाइम है, टाइम जोन का टाइम है, देयर इज सो मच अबाउट टाइम। तो टाइम में तो एक पूरा लेक्चर चला जाएगा, इतना है टाइम के बारे में डिस्कस करने के लिए। एंड और एक समय में सब कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, फिलहाल स्लीप देखा हमने, आई एम गोना मेक यूज ऑफ दिस स्लीप। तो व्हाट आई एम गोना डू नाउ, आई एम गोना शो यू अ स्क्रिप्ट। मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, print1.py, नहीं ये वाला नहीं, demo.py। मैंने कहा फॉर आई इन द रेंज 5, तो मैं 5 नंबर जनरेट करने वाला एक के बाद। मैंने कहा आई, ये नंबर प्रिंट करो, एंड में स्पेस डालो, और फ्लश इक्वल टू फॉल्स कहा मैंने, फ्लश इक्वल टू फॉल्स। बाय डिफॉल्ट ही फ्लश फॉल्स है, लिखने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा स्लीप 1, तो 1 सेकंड के लिए स्लीप करना है बिटवीन 2 आउटपुट। तो लेट्स रन दिस स्क्रिप्ट। तो ऐसे पाइथन demo.py, देखो क्या हो रहा है, 1 सेकंड स्लीप किया। अरे डिड स्लीप फॉर 1 सेकंड, या कितने सेकंड के लिए स्लीप किया? डिड डिस्प्ले 1 सेकंड आफ्टर अनदर टाइम दिखा, नंबर्स प्रिंट किए उसने 0 1 2 3 4? नो सर। नो नो नो, इट डिड नॉट डू दैट। लेट्स रन द स्क्रिप्ट 1 सेकंड, क्या हो रहा है देखो जरा। इट इज स्लीपिंग फॉर हाउ मेनी सेकंड्स? 5 सेकंड्स, और 5 एकदम से ही seconds. सारे आउटपुट प्रिंट कर रहा है। Sir. यस और नो? Yes sir. That's because whatever you are sending through print is going into the buffer of sys.htdout। यानी आपके पास एक sys था, तो यहाँ था आपका file is equal to sys.htdout, that's the default one, correct? और इसका भी एक buffer है, तो आपका ये जो पहला आउटपुट है ना, प्रिंट आए, प्रिंट 1 प्रिंट 2, ये सब कुछ जाके बैठा है कहाँ, तो stdout के बफर में। और फ्लश का वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है? फॉल्स। फॉल्स, ये फ्लश नहीं हो रहा है। तो ये यानी चारों नंबर गए बफर में, और एट द एंड फिर जब पूरा प्रोग्राम खत्म हो गया तो स्ट्रीम क्लोज हो गया, तो सारे एक साथ आ रहे हैं। नाउ लेट्स चेंज दिस फ्रॉम दिस टू ट्रू। अब इसको मैंने ट्रू में चेंज कर दिया, फ्लश इक्वल टू। अब देखते हैं, समझ में आया डिफरेंस? यस। फ्लश का डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? तो जब मैंने फ्लश Yeah. ट्रू कहा, कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग? ये लुक एट द कोड, एनीबडी? जब मैंने फ्लश इक्वल टू ट्रू कहा, फ्लश इक्वल टू फॉल्स कहा, उसमें डिफरेंस क्या था? So every time the for loop works, हाँ? it is not keeping it in buffer. It is just flushing out फ्लशिंग टू द the output device. आउटपुट है, डेस्टिनेशन, जो भी आपका एचडीओटी का डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है एचडीओटी का? So for now it is monitor. बाय डिफॉल्ट क्या है? आउटपुट स्क्रीन, कंसोल। सो वेरी करेक्ट, हु एक्सप्लेन दैट? Sorry? शंतनु ने बताया अभी है। Yes sir. ओके, वेरी गुड शंतनु। सो बाय डिफॉल्ट फ्लश का वैल्यू क्या है संजय? False. फॉल्स। व्हाट डज इट मीन?
इट मीन्स फ्लश नहीं होगा, आउटपुट फ्लश नहीं होगा, यानी कहाँ जाएगा रहेगा वो आउटपुट? आउटपुट स्ट्रीम में रहेगा, आउटपुट स्ट्रीम के बफर में रहेगा, बफर में। करेक्ट। और फ्लश इक्वल टू फॉल्स कहा तो, ट्रू कहा तो ये स्ट्रीम से डेटा फ्लश होके आउटपुट मॉनिटर पे आ आउटपुट जाएगा। डिवाइस पे आ जाएगा, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। और बाय डिफॉल्ट वो yes. मॉनिटर है, बट जहां भी आउटपुट डिवाइस है हाँ। वहां चला जाएगा। तो नाउ यू ऑल टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट प्रिंट है? ये प्रिंट का जो सिंटैक्स देखा था हमने, हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग? वैल्यू, सेट, एंड, फाइल, फ्लश, सब कुछ समझ में आ गया? Yes, sir. फ्लश का Yes, मीनिंग sir. क्या कहता है? वेदर टू फोर्सफुली फ्लश द स्ट्रीम और नॉट। नाउ टेल मी, व्हाट वुड यू प्रिफर, फ्लश ट्रू या फ्लश फॉल्स? जो ट्रू है वो टिक कीजिएगा, जो फॉल्स है वो क्रॉस कीजिएगा। लेट मी सी हाउ मेनी वांट ट्रू एंड हाउ मेनी वांट फॉल्स। फ्लश, It depends on the scenario, no, sir. इट डिपेंड्स अपॉन द सिनेरियो। वेरी गुड, हु इज दैट? शंतनु, क्या सिनेरियो पे डिपेंड करता है? शंतनु बताइए। Sir, if we want the output to be like on the at that moment, like I am writing a script and I want to write the output in my output file on the runtime, so I will use flush as true. And if I want all the data at once, so there I will use flush equals to false. ओके, दैट्स वन यूज केस। बट मेरा क्वेश्चन मैं थोड़ा अलग पूछता हूँ, अगर मुझे परफॉर्मेंस चाहिए तो फ्लश फॉल्स रखोगे या ट्रू रखोगे? False रखेंगे sir. फॉल्स रखोगे, वेरी गुड। रीजन फॉर दैट इज, आपको जो डिवाइस होता है ना, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क है, दे वर्क वेरी स्लो एज कंपेयर टू द मेमोरी। तो मेमोरी में राइट करके रखना इज वेरी फास्ट, सेंडिंग इट टू द मॉनिटर, सेंडिंग इट टू द प्रिंटर, सेंडिंग इट टू द फाइल इज ऑल द मोर स्लोअर। तो आपका जो है ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा अगर आप हर एक कैरेक्टर प्रिंट करने जाते हैं मॉनिटर पे, या राइट करने जाते हैं हार्ड डिस्क में, या प्रिंट करने जाते हैं प्रिंटर पे, आपके प्रोग्राम का लैग बहुत हो जाएगा। तो जितना ऑपरेशंस, जस्ट एक गाइडलाइन करके रखो, इफ यू रियली वांट परफॉर्मेंस, वेरी और पॉसिबल है, कभी कभार पॉसिबल वो चॉइस नहीं होता हमारे पास, बट वेरी और पॉसिबल परफॉर्म इन मेमोरी ऑपरेशन। तो मेमोरी इज द फास्टेस्ट एरिया while you are running your program other than registers. Memory is the fast, हमने देखा है ना, memory RAM के अंदर registers, and that we have learned in logic नहीं, computer fundamentals. So memory is the fastest, RAM is the fastest area as compared to hard disk and other devices. So wherever possible do perform in memory operation. जहाँ आपके पास चॉइस नहीं है तो डिवाइस के पास जाना होगा, आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करना होगा, तब आप फ्लश को ट्रू कह सकते हैं। बट जितनी देर तक अगर आप फ्लश ट्रू नहीं कहोगे, दैट्स बेटर, बिकॉज डेटा बीइंग read and written to the memory is always faster as compared to read and write on the hard disk or read and write from the monitor. Guideline समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. And don't worry even if you don't understand now, because Python में आगे जाके फाइल हैंडलिंग करेंगे, we'll handle devices. At that time I'll again talk about it. But क्यों ना ये कॉन्सेप्ट दिमाग में पहले से जाए, तो जहां तक पॉसिबल है वहां फ्लश फॉल्स ही रखेंगे, जहां चॉइस नहीं वहां फ्लश ट्रू करेंगे। बट माय फर्स्ट चॉइस विल बी कीपिंग फ्लश एज फॉल्स। रीजन इज इट विल गो इनटू बफर। बफर कहाँ है? रैम में बफर है, टेम्पररी मेमोरी एरिया है, और रैम में रीड राइट करना इज ऑलवेज फास्टर एज कंपेयर टू परफॉर्म रीड राइट ऑपरेशन फ्रॉम एनी अदर डिवाइस। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? सर वो डिवाइस के बफर में नहीं जाएगा? डिवाइस के बफर में बाय डिफॉल्ट जाएगा। फ्लश फॉल्स कहा, ट्रू कहा, तो बफर से होते हुए डिवाइस तक जाएगा। ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम द बफर टू द डिवाइस इज स्लोअर, ट्रांसफर डेटा फ्रॉम द प्रोग्राम टू द बफर इज वेरी फास्ट। सर वो डिवाइस अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर के बफर में जाएगा ना? अनफॉर्चुनेटली डिवाइसेस लाइक प्रिंटर आल्सो हैव बफर्स टुडे। यस ओके, सर, वो 1 MB तक बफर हो सकता है, तो प्रिंटर के बफर में जाएगा। बट हमेशा प्रिंटर बफर ही रहे, पुराना प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, उसमें तो बफर नहीं है। तो इन दैट पर्टिकुलर केस इट विल गो टू द प्रिंटर। प्रिंटर में जब तक प्रिंट नहीं होता है आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आजकल के प्रिंटर का भी बफर होता है। How does it choose then? हाउ डज इट? How does it decide where to go? If it detects buffer in printer, then where will it go directly, or will it stay in the RAM only? कम अगेन? Sir, if printer has the buffer, हाँ, so will it go directly to the printer buffer? हाउ विल यू गो टू द प्रिंटर बफर डायरेक्टली? अगर मैं बफर की स्टोरी बताऊं आपको तो परेशान हो जाओगे। प्रोग्राम हैज एप्लीकेशन हैज अ बफर, ओएस हैज अ बफर, डिवाइस हैज अ बफर। तो आजकल ना बफरिंग हर जगह यूज किया जाता है। तो अगर आपने बफर नहीं किया, फ्लश कहा, तब भी ओएस का भी एक बफर लेयर है, तो ओएस अपने बफर में स्टोर कर सकता है।
वो अगर आपने कैंसिल किया तो डिवाइस का भी बफर है. एवरी डिवाइस टुडे हैज अ बफर, इवन कीबोर्ड हैज अ बफर, एवरी डिवाइस हैज अ बफर, एवरी डिवाइस हैज अ मेमोरी. तो आप प्रिंटर पे देखोगे तो आपके प्रिंटर के, आपने कभी प्रिंट किया है डॉक्यूमेंट, तो प्रिंट करने पर है ना, वो पहले कहता है नीचे प्रिंटिंग, और वो ऐसे एक नीचे आइकन दिखाता है पेजेस जा रहे हैं, यानी उतने जितने बफर में आ गए हैं पेजेस. आपने अगर फिर मशीन डिस्कनेक्ट भी कर लिया ना तो भी प्रिंटर काम करते रहेगा. एक काम करो, एक 10 पेजेस की फाइल प्रिंट करना शुरू करो और फिर मशीन को शट डाउन करो, वो प्रिंटर तब भी चालू रहेगा फॉर द नेक्स्ट 10 पेजेस. कभी करके देखो. या प्रिंटर को डिस्कनेक्ट करो आपकी मशीन से प्रिंट करने के बाद, चालू होने के बाद, आप देखोगे वो बाद में कभी भी प्रिंट करते बैठता है आगे की पेज. व्हाई? बिकॉज दोस डेटा हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू द बफर ऑफ द प्रिंटर. बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट डिवाइस हैज. हार्ड डिस्क पे भी बफर है. आप बोले यार हार्ड डिस्क ही मेमोरी स्पेस है, अरे उसके ऊपर भी चिप है, अनलेस इट इज एसएसडी डिस्क. तो ये साटा डिस्क वर्क वेरी स्लो. तो आप क्या करते हैं आजकल, साटा को फास्ट काम करने के लिए ना उसके ऊपर रैम आता है हार्ड डिस्क के अंदर. तो इट विल गो टू द डिस्क का बफर, एंड फिर आप अपना अगला काम करो, वो फुर्सत में वो डिस्क के बफर में से डिस्क पे डेटा राइट करेगा. तो बफर Sir, स्टोरेज इज वेरी कॉम्प्लेक्स. are you talking of DRAM? नो, वो SSD में होता है. या एसएसडी में तो वो बफर ही नहीं, वो पूरा ही बफर ही है एसएसडी. इस लाइक रैम. मैं कह रहा हूँ आपके साटा डिस्क के बारे में बात कर, रेगुलर डिस्क. तो assuming that your device has no buffer, ऐसा assume करते हैं, and OS का भी कोई रोल नहीं है, तो in that case buffering is a better option, but buffering can be controlled at multiple levels. So let us not get into those details कि buffering का level क्या है. मैं आपको इसे बता रहा हूँ, there are multiple buffers, application buffer, OS buffer, device buffer. तो अलग अलग टाइप के buffers होते हैं. And through Python or any other language, we can control and interact with all those buffers. OS का buffer, एप्लीकेशन का बफर. एप्लीकेशन बफर तो आपके हाथ में, पर ओएस के बफर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं और डिवाइस के बफर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं. बट दैट्स स्टोरी फॉर सम अदर डे. हाउ टू डू इट. सो व्हाट वी हैव लर्नड इज ओनली वन फंक्शन. वी हैव प्लान्ड फॉर टू. So let me just give a quick introduction to another function so that you can play around with that. Another 5 minutes and we'll stop. So another function that I plan to discuss for you other than print is a function called as input. Because input and output are the most common operations that we perform. So input and we have an optional prompt. Look at this. जब कभी syntax में square bracket दिखाई देगा, understand it is not compulsory for you to pass that argument. It's optional. जब angular bracket दिखाई देगा, compulsory है. If the prompt argument is present, if it is present, it is returned to the standard output without returning new line. The function then reads the line from the input, converts into string, stripping away the trailing new line that it returns. तो अगर मैंने कहा what's your name, it will print what's your name and we can print that thing. Let me give you a glimpse about this, how to work with it. And then आपके लिए एक छोटा सा assignment. ये खत्म हो जाएगा अभी, don't worry. कहाँ गया मेरा Python? यहाँ है. So I want to read some numbers from the user. मुझे कोई I want to ask what to Sanjay, what's your age? I want to ask him. अब तक हम लोग print कर रहे थे, तो मैं कहूँगा age is equal to input. और ऐसा था, सिर्फ इनपुट था, तो ऐसा आ रहा है इनपुट. इट्स वेटिंग फॉर मी टू एंटर सम डेटा. इट विल वेट इंडेफिनिटली. समझो संजय इज 20 years old, तो मैंने कहा 20, तो जरा एज वेरिएबल की वैल्यू देखोगे तो एज में वैल्यू 20 आ चुका है. बट ये यहाँ देखा अपने कोट्स में आ गया है, यानी स्ट्रिंग करके आ गया है. तो टाइप ऑफ एज चेक करूंगा मैं, तो से इट्स ऑफ टाइप स्ट्रिंग. एज क्या था, स्ट्रिंग था या इंटीजर था? एज का टाइप क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए या इंटीजर चाहिए? इंटीजर चाहिए, बट वो स्ट्रिंग आ चुका है. दैट्स ओके. अब यहाँ मैंने जब ऐसा मैसेज दे दिया इनपुट, हाउ वुड वन नो क्या इनपुट देना है? मैसेज तो नहीं आया, तो आपके पास एक दो चॉइस थे. आई कुड फर्स्ट से प्रिंट व्हाट्स योर नेम. देखो मैं क्या करा, व्हाट्स योर नेम. पहले उसने पूछा व्हाट्स योर नेम, एंड देन आई से नेम इज इक्वल टू इनपुट, एंड देन आई इनपुट माय नेम एज राजेश, एंड देन आई से प्रिंट नेम. ये तो राजेश है. दैट्स नॉट वेरी गुड. मुझे ना व्हाट्स योर नेम के आगे इनपुट करने का मौका चाहिए था. तो व्हाट कुड आई डू? I could say name is equal to input. Watch it. यहाँ बीच में मैं prompt दे सकता हूँ. तो मेरे पास एक ऑप्शन है. Here I'll write
what's your name? ऐसा मैसेज आता है. इसका एडवांटेज देखिए, what's your name? Closure is on the same line. And now I have a chance to enter my name. So I enter my name as Priya. तो ये नेम नाम की वेरिएबल में स्टोर हो चुका है. अब जरा नेम का वैल्यू प्रिंट करते हैं, ऐसे प्रिंट एंड ऐसे हेलो नेम. तो कहते हैं हेलो प्रिया. Understood this? So I can write a small script now. So let's write a small script. क्या लिखेंगे एक script? I want to accept details of the user, like his name and age, and then I will greet him and tell him you are these many years old. तो मैं कहूँगा यहाँ पहले name is equal to input. What's your name? Question mark. Okay. Then I'll say city is equal to input. So which city do you belong to? ऐसा कुछ तो एक क्वेश्चन पूछा एंड देन मैंने उसको ग्रीट किया. हेलो नेम, योर सिटी इज सिटी. ऐसा कुछ तो मैसेज प्रिंट कर दिया. इस फाइल को सेव कर लेते हैं. आई गिव दिस फाइल a name as io.py. ऐसा कुछ तो नाम दे दिया io.py. Oh, let's save this file once again. Save as. I should not save it as normal type. I should save it as Python file. So I say io.py. Save कर लो. Let's run this program. यहाँ है, मैंने कहा Python io.py. What's your name? मैंने कहा मेरा नाम है हर्ष. What city do you belong to? He says I belong to Pune. कहता hello Harsh, your city is Pune. Look at the code. So we got a message. We could enter the data right after that. I say which city you belong to? मैंने कहा Pune. तो इसने कहा hello Harsh, your city is Pune. So I can say hello, that's a string literal, then a variable, then again a string literal, again a variable. You can pass any number of arguments. Okay. So input is a function which can be used for accepting the data. Now the only problem over here is I wanted to accept your age. Okay. So I take one more variable called as age. I say input. I say what's your age in years? ऐसा एक मैसेज उस पर आ गया. Okay, and I print the age. Print. I say hello. Watch it. Hello name. You are age years old. ऐसा कुछ हमने कर दिया. Let's save this and run it. Okay, what's your name? I say my name is suppose Jaggu. Which city you belong to? I belong to Nasik. कहता hello Jaggu, your city is Nasik. What's your age? He says 34. कहता hello Jaggu, you are 34 years old. Everybody okay with this? तो जग्गू इस साल 34 है, तो अगले साल कितना रहेगा? 35. 35. So now I want to tell him you will be these many years next year. Hello Jaggu, you will be age plus 2 years, 1 year old next year. तो अगर उसका एज 34 है तो यहाँ मैसेज क्या आना चाहिए? राहुल 35. 35. तो पूरा मैसेज क्या आएगा अगर जो नाम जग्गू है तो? Hello Jaggu, you will be 35 years old next year.
Okay, let's try this one. So when I run this particular program, I enter what's your name. I enter the name as Jaggu. Jaggu belongs to Mumbai. Mumbai. His age is 34 this year. क्या कह रहे हो? It says error. तो ये integer ये कहता है cannot concatenate string. मैं string को string के साथ ऐड कर सकता हूँ. String में integer ऐड नहीं कर सकता. One integer हो गया और age string हो गया. String और integer ऐड नहीं कर सकते. यानी आपका जो age accept हुआ था, that was accepted as an integer and not as a string. Okay. Accepted as a string. Not as an integer. तो ये जो फाइल है ना io.py, let's open in this ID. It looks nice, है? तो यहाँ मैं जा सकता हूँ. फाइल ओपन, जरा कलरफुल दिखाई देगा. फाइल ओपन. अपने फाइल का नाम क्या है? io.py. io.txt. यहाँ ओपन करें. It looks nice to read. अच्छा लग रहा है रीड करना? कलरफुल. पता चलता है कहाँ क्या लिखा है. Can you see that? Yes. Okay. So that problem is when I accept the input, it always returns a string. और ये देखिए इनपुट कुछ भी एक्सेप्ट किया ना तो स्ट्रिंग आ जाता है. जैसे हमने कहा देखा था यहाँ का इनपुट, मैंने कहा एज दिया. एज देखो कौन से टाइप में आ गया. कैन सी स्ट्रिंग में है. डबल कोट्स मतलब डबल कोट्स सिंगल कोट्स स्ट्रिंग में है. यस सर. Sir. Okay, यहाँ मैंने टाइप ऑफ एज देखा स्ट्रिंग था. Yes. मुझे इंटीजर चाहिए. तो देयर इज वन फंक्शन कॉल्ड एज इंट. यानी अगर मेरे पास कोई डेटा है, लुक एट दिस, एज इज इक्वल टू 66 कोट्स में डाला है ना. तो इफ आई से टाइप ऑफ एज, ये कहता है स्ट्रिंग है, तो मैं क्या सकता था, ये जो 66 है ना इसे इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ. इंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ. और अब मैं टाइप ऑफ एज कहूँ तो इंटीजर आ रहा है. इधर ओके. Yes. तो इनपुट फंक्शन लेते समय व्हाट आई कुड डू, आई कैन मेक सम चेंजेस इन द कोड नाउ. इनपुट लेते समय हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इनपुट ले लिया इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैंने कहा इंट, वो कहता है जो भी आप पास करो उसे मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा. तो अंडरस्टैंड दिस, दिस विल रिटर्न अ स्ट्रिंग एंड उस स्ट्रिंग को हम लोग कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में और फिर एज में मैंने स्टोर कर लिया है. तो नेस्टेड किया, फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल किया. इनपुट फंक्शन रिटर्न्स यू अ स्ट्रिंग, उसका आउटपुट मैंने पास किया इनपुट को, इंट में उस स्ट्रिंग को उसे कन्वर्ट किया इनटू इंटीजर एंड दैट वाज असाइन्ड टू दिस वेरिएबल एज. नाउ दिस विल वर्क व्हाट राहुल हैड सेड. तो लेट्स टेस्ट दिस पर्टिकुलर कोड. ये रन करने के लिए रन में गया. रन कहाँ, तो कहता है व्हाट्स योर नेम. आई से माय नेम इज कालिया. व्हिच सिटी यू बिलोंग टू. आई बिलोंग टू लंदन. हाउ मेनी इयर्स यू आर ओल्ड. ही सेज 34. तो कहता है हेलो कालिया, यू आर 34 years old. हेलो कालिया, यू विल बी 35 years old next year. Understood the difference now? So what we did is this input which was of type string, we converted to integer and we have carried out those operations. So have you understood these two functions, print and input? Everybody? Yes, Quick sir. feedback. Sir, if we don't put those double quotes or single quotes, will it make integer? It will not work. Because input में जब भी कोई मैसेज पास करते हैं, स्ट्रिंग जब भी आएगा डबल कोट्स में डालना है. Prompt is a string message. The string message always has to be in double quotes. Okay. Now a small assignment for you. आपको क्या करना है, एक छोटा सा कोड लिखना है. And so please note down the assignment and which you should come prepared tomorrow. Very simple question. Please note down. Accept two integers and display their addition. और आसान नहीं हो सकता है. We will ask the user to enter two integers. Okay, and you are going to display the addition of those two numbers. So please note down. Accept two integers and display their addition. Simple सा question. वो आपको solve करके आना है. Okay. And you all have got access to e-learning portal. उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगे. मैं hide कर दूंगा so that you can focus only on what you currently need with me. And I failed to fulfill the promise yesterday. वो जो link share करना software करना भूल गया. I'll share it tomorrow. Okay, so you can download it day by now. Any question, anybody? Have you all understood whatever we have discussed today? Yes, sir. Pankaj, Harsh, Sunita, Rohit. Yes. Okay. So with that note, we'll stop here today. But do practice out all the things. इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे. but जो हमने देखा है वो सारा स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर दीजिएगा.
रिवाइज और प्रिंट वगैरह तो टाइप करोगे तो वही हेल्प दे देता है वो डायरेक्टली. तो जस्ट मेक श्योर दैट यू एक्सपेरिमेंट विद ऑल दोस फीचर्स. ओके एंड बी रेडी फॉर टुमारो सेशन. थैंक यू ऑल. टेक केयर. लव यू ऑल. बाय बाय.